Okay. So class, good afternoon and welcome to the day 3. So today we are going to cover two important topics. One is Python, OOPS in Python, and second is working with Pandas. And before starting, so some queries are from the student side. Very first is Anaconda क्या होता है, Jupyter क्या होता है, ये सब चीजें. So class, ये both the things will come with the Anaconda. Anaconda एक बड़ा tool है अपना that consists of multiple sub tools like Jupyter. तो Jupyter एक notebook टाइप से है जिसमें हमें अपने लोकल सिस्टम पे ही हम जैसे हम गूगल को लैब पे काम कर रहे हैं सेम वैसे ही इट प्रोवाइड द ब्राउजर बेस्ड एनवायरनमेंट. तो नेक्स्ट है अपना एंड ये क्या कहते हैं स्पाइडर. तो स्पाइडर में इस तरह से शेल आएगा अपना. लेट्स सपोज आई एम राइटिंग वन प्रोग्राम a equal to 10, b equal to 20 and c equal to a plus b and print c. Okay, so just run the program, and by running I think F5 is there. ठीक है. So Saleh, you need to save the program. Save करिए इसको. Give some number. File. Save as. And let's suppose you give the name as undefined py. Go to tools. Yes, run. So for running this program, you need to press either F5 or click on run. So just see, this is a small program that is run. Okay, and the output is 30. So class, Spider is one of the tool that is IDE, Integrated Development Environment. तो जहाँ पे हम program लिखेंगे Python में, and these program will run in my local machine. Similarly, Jupyter क्या होता है, वो अपना browser based environment है, तो वो भी अपने को notebook provide करता है. So I hope ये चीजें clear हो गई. सर स्पाइडर मतलब एक कंपाइलर ही होगा. कंपाइलर ही होगा, जैसे आप C++ के प्रोग्राम VC पे लिखते हैं, सेम वैसे ही होंगे. Sir, तो which one do you advise us to use? Anyone? Google Colab. Okay, sir. ठीक है, because क्या Anaconda is also the same thing. Which one? Anaconda is also the same thing. नहीं, Anaconda एक बड़ा टूल है, उसके अंदर मल्टीपल पैकेजेस, मल्टीपल स्मॉल सॉफ्टवेयर्स है. तो Jupyter is one of the tool. इसी तरह आपका क्या कहते हैं, ये स्पाइडर है. Anaconda एक बड़ी चीज है, उसके अंदर सारे मल्टीपल ग्रुप है. ओके, Jupyter स्पाइडर सर्वर सेम पर्पस. हाँ सेम है बेसिकली. अगर आपको आईडी पे प्रोग्राम करना है देन यू नीड क्या कहते हैं, ये स्पाइडर पे लिखना पड़ेगा या वीसी पे लिखना पड़ेगा, या देयर इज अ पाइचार्म आल्सो एडिटर है. एंड Jupyter इज अ क्लाउड बेस्ड ब्राउजर बेस्ड रहेगा. बट आई रिकमेंड व्हेन यू गॉट लेट्स सपोज यू गॉट अ सर्वर, आपको बहुत अच्छा सर्वर मिला है वहाँ पे, लेट्स सपोज 100 GB रैम है एंड बहुत अच्छा कोड मिला है, देन यू नीड टू राइट इन द आईडी में लिखना जरूरी है, बिकॉज दैट प्रोग्राम नीड टू रन थ्रू कमांड लाइन ओनली. तो वहां पे ये ब्राउजर बेस्ड इन टाइप की जरूरत नहीं है अपने को. क्लास गॉट इट? यस सर. Yes, sir. यस, एक मिनट रुक जाइए. ओके, सो क्लास, वेलकम टू डे 3. So today's topic is OOPS with Python and working with Pandas. So these are the two topics जो हम आज cover करेंगे. But before moving forward, so self learning. So I hope आप सभी ने अपने GitHub accounts बना लिए होंगे. अगर कोई issue है, so this is the 4 videos that will train you how to use GitHub, how to generate request, pull कैसे करना है, push कैसे करना है, repository कैसे create करनी है. All these things are there. So it is highly recommended कि आप ये चारों के चारों वीडियो देखो. All are between 10 to 20 minutes के बीच के वीडियोस हैं. So that will give you the glimpse कि why GitHub is important. Next, just click on this link, sample profile.
So I want ki everybody should have a Google profile, GitHub profile like this only. So he is Raj. He is a final year student from Thapar. Right now he is on the internship. So इसकी प्रोफाइल आपकी बहुत अच्छी बनी हुई है, ठीक है? तो ना उसके एरियाज क्या हैं, उसके सोशल मीडिया के हैंडलर्स क्या क्या हैं, व्हाट आर हिज स्किल सेट्स, ओके, उसको कौन कौन से बैजेस मिले हुए हैं, कितने नंबर ऑफ कमिट्स उसने किए हैं, टोटल स्टार अर्न कितने हैं, ओके, टॉप लैंग्वेजेस क्या क्या है, इस पे काम करता है, एंड हिज पॉपुलर रिपोजिटरीज क्या क्या है. एंड दिस इज कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? गिटहब कंट्रीब्यूशन में कि मैंने अपने कितने नोटबुक यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, कितने प्रोजेक्ट्स अपलोड किए हैं. जैसे आप ये जो वर्किंग विद पांडास करेंगे, ठीक है, तो मेरे गिटहब में इसको रीडायरेक्ट करेगा. एंड इफ यू गो टू माय होम पेज pskhana.com, सॉरी pskhana, देन ये रिपोजिटरीज, तो कितने मैंने प्रोजेक्ट सबमिट किए हुए हैं, तो मीन्स 33 मैंने प्रोजेक्ट्स है ये. एंड राज के देखो कितने हैं, राज के हैं 38. Okay, so these are the repositories. If you click on the repositories, ये आपके सारे projects हैं. So I want कि everybody have this type of profile. So how to create this similar profile? So just go to this video that will explain कि अपनी profile कैसे बनानी है. Okay, because in the coming days nobody ask for the CV. कोई CV resume आपसे मांगने वाला नहीं है. You can directly send कि this is my GitHub profile. That's it. So it automatically बता देगा कि भाई आपने क्या क्या किया हुआ है. Are you getting? So nowadays जो यहाँ पे आपका होम है, you go to the Raj page, ये फोटो बन गई है, and इस तरीके से overview. This is the page जो मैं चाहता हूँ सभी का. And the most important part is that this activity, and you just जो भी मैं आपको असाइनमेंट मिनी प्रोजेक्ट्स दे रहा हूँ, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप सभी को उसको गिटहब पे अपलोड करेंगे. सो दैट विल इंक्रीज योर रिपोजिटरी इन गिटहब. ओके, एंड दिस एक्टिविटी शोज कि हाउ मच एक्टिव यू आर ऑन गिटहब. ये अपने आप में खुद में एक प्रूफ है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, रिपोजिटरी बनाते हैं, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग. किसी रिपोजिटरी को प्राइवेट करना है, पब्लिक करना है, वो आपकी है. बट आई वॉन्ट कि सारे मिनी प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट जो भी कुछ है वो आप गिटहब पे डालिए. तो एट द एंड ऑफ 45 डेज तो आपका प्रोफाइल में काफी सारी आपकी रिपोजिटरीज आ जाएंगी. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है. ओके, तो दिस इज माय एक्सपेक्टेशन कि आप सभी अपना प्रोफाइल बनाएंगे. एंड किसी का कुछ है तो मुझे शेयर कर दीजिए, सो दैट आई कैन शो टू अदर स्टूडेंट ऑल्सो. तो मुझे व्हाट्सएप कर देना जिसने कुछ अपना इस तरह का अच्छा प्रोफाइल बनाया हुआ है. चलिए, नाउ क्लास, नेक्स्ट रिसोर्स ऑफ द डे. Just click on this link, resource of the day, papers with code. Open करिए इसको. ओके, एक स्टूडेंट है नमन. शाबाश चौधरी साहब, आपने बहुत अच्छा प्रोफाइल बनाया हुआ है. तो ही इज द करंट स्टूडेंट, नमन है. So he also created his profile. शाबाश नमन, बहुत अच्छे. थैंक यू सर. अब ये जो यहाँ पे कम ग्रीन दिख रहे हैं, आई वांट कि आप इसको थोड़ा सा अच्छा करो, एक्टिविटी बढ़ाओ. एंड रिपोजिटरी जैसे नमन की 14 है, तो ये प्रोफाइल शो करता है कि बच्चा कुछ काम करने में है, अच्छा काम कर सकता है, ये सब चीजें कर सकता है. ठीक है, तो पुट ऑल योर प्रोजेक्ट्स, मिनी प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स ऑन गिटहब ओनली. चलिए, now class, this is the home page for papers with code. This is a wonderful repository that publish the research paper with GitHub code. कि जो AI में, मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, इमेज प्रोसेसिंग में, NLP में, जनरेटिव AI में, कोई भी डोमेन जो AI रिलेटेड है, उसमें जो टॉप रिसर्च है, रिसर्च पेपर है या फिर कोई टॉक है, वो सब चीजें यहाँ पे पब्लिश करता है विद कोड ऑल्सो. तो इफ यू, तो जो आपको हमने 1 पेज राइटिंग वाला डेली एक्टिविटी का दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी इन पेपर को भी उठा सकते हैं आप लोग. ओके, तो जैसे इन द वेरी फर्स्ट टॉक आई टॉक अबाउट LLM. ओके, तो LLM इज नथिंग बट अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल.
तो देखो यहाँ पे कि कोई रिसेंट पेपर आया है, तो इसको भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं कि भाई इसने क्या किया हुआ है। तो इन पेपर्स को भी यू कैन राइट इट। So the best part is that come to browse state of the art. So on the top ये लिंक है आपका, इस पे क्लिक करिए। Browse state of the art. So it categorizes the complete research paper into subcategories like computer vision. This is one of the domain of AI, NLP, medical, miscellaneous, methodology, time series, graph, speech, audio. So let's suppose you want to work in audio domain. Then speech and audio, this profile will help you. Next, reasoning, computer course, playing games, robotics. If you want to work in robotics, autonomous drone is there, autonomous vehicle is there. So these papers, these will help you. Okay. Now come on the top side. So let's explore computer vision. So just click on 1504 task. Click करिए. Very good. So again, they divide the computer vision into subdomains like semantic segmentation. अब ये होता क्या है? This is the thing that you need to explore. Again, representation learning, classification, image classification. We need to classify the image. Let's suppose facial expression है. तो facial expression में वो expression कितने type का है, उसका कुछ कोई project हमें बनाना है. Object detection, तो वो जो मैंने आपको बात की है YOLO. So object detection is there, domain adaptation is there, image generation. So again, if you click on C21 task, तो image generation से related all sub tasks यहाँ पे आ गए हैं. Okay, let's suppose this is a facial in painting. You got some part of the image only, then you are requested to regenerate the complete face. So ये इस टाइप से कुछ research होगी. So if you click on any of the link, let's suppose layout to image generation, so click करिए. So you will find all the research papers. Some provide the GitHub code also. Okay. Then the best part is data set, जो कि इस research में use किया गया है, and उसके relevant paper और यहाँ पे उसने दे दिए हैं. Okay. So that is the complete repository. यहाँ से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको. Just this is a one stop, one page है जहाँ पे आपको सब चीज मिल जाएगा. There is no need to ask someone कि हाँ भैया किस domain में काम करना है. Just browse the state of the art, domain set करो, research paper पढ़ो, GitHub के code को execute करो, and that's it. Next, data set. इसमें बहुत सारी चीजें हैं. Just open the data set. So for the machine learning and deep learning, we require a lot of data. So many question is कि data set कहाँ से मिलेगा? So this is one of the resource. So papers with code, and there are three important terms. Number one, filter by modality. Let's suppose you want to work in text or video or audio, medical, graphs, speech. So first you need to identify कि किस domain में आप करना चाहते हैं. Okay. So let's suppose speech पे click किया, तो there are 156 data set available. Okay. Similarly, if you scroll down, filter by task. Let's suppose you want in any of the, let's suppose object detection is there, or some other task, image classification, speech recognition. Okay. So these are the tasks. किस task के regarding आप करना चाहते हो. Okay. And then again, there are multiple filters by languages. किस language में आपको करना है, तो you can also search. But the best part इसमें क्या है? Searching. So in the top left corner, you will find a search window, and just write for face and just wait. So let this give you suggestions. तो ये आपको suggestion देगा कि आपको face swapping करना है, detection करना है, recognition करना है, then some leaderboards, then some research papers, then data sets, and some methods. So that completely give you a complete overview of data sets. तो ये आपकी एक बहुत अच्छी रिपोजिटरी है. यहाँ से आप रिसर्च पेपर को लिख सकते हैं, जो वन पेज राइटिंग में मैंने आपको बोला है. इन वन पेज राइटिंग यू नीड टू राइट एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्लूजन बाय हैंड, देख के. डेली बेसिस पे 2 पेपर का करना है आपको. ठीक है. तो बाय द एंड ऑफ दिस वीक
मंडे को आपको चेक किया जाएगा, ठीक है, एंड यही चीज आपको डेली एक्टिविटी में सबमिट करनी है। तो क्लास दिस इज अ वंडरफुल रिसोर्स। चलिए नेक्स्ट सम असाइनमेंट्स इज देयर जो कि हम करने वाले हैं, एंड सम मिनी प्रोजेक्ट्स आर देयर। So let me explain your very first mini projects. So just click on the link. सर Yes. डे 2 का मिनी प्रोजेक्ट 3 समझ में नहीं आया था। अभी explain करता हूँ. Just wait for 2 minutes. So let me explain the mini project 4. तो मिनी प्रोजेक्ट 4 में क्या है, यहाँ पे मैंने एक फाइल दी है आपको, CSV फाइल। इसमें क्या है, दिस इज द मार्क्स फॉर एवरी स्टूडेंट। तो इनपुट फाइल में क्या है, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबके रोल नंबर्स हैं एंड उनको कितने मार्क्स मैंने दिए हुए हैं। ओके नाउ अब आपको क्या करना है, अब जैसे रोल नंबर ये 640 रोल नंबर है, इसको दे 3 मार्क्स, 3 जगह मार्क्स मिले हुए हैं, तो उस सबको ऐड करके आपको एक रोल नंबर एंड टोटल मार्क्स को ऐड करना है आपको। ओके तो दिस इज द थिंग जो आपको करना है। ओके इसी तरह यानी कि जो आउटपुट फाइल है आपकी, जो रोल नंबर है दैट मस्ट बी यूनिक। एक ही रोल नंबर के टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं वो करना है। सो दिस इज द थिंग जो आपको इम्प्लीमेंट करना है। सो आई होप आप कर पाएंगे। सो कोई एनीवन तो यहाँ पे सजेस्ट करेगा कि इसको कैसे कर सकते हैं अपन लोग? एनीवन इसको कैसे सर हमें? पहले सर्च कर लेते हैं। नहीं, सर्च वगैरह से नहीं होगा। सर हैश मैप के थ्रू कर सकते हैं, जो रोल नंबर है उनको की ऐसे की लेके मार्क्स को ऐड कर सकते हैं। हाँ तो यहाँ पे हैश मैप नहीं चलेगा। काउंट सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप, हाँ वेट यहाँ पे आपको करना है, डिक्शनरी बनानी है। तो डिक्शनरी के थ्रू यू कैन इजीली डू दैट। ठीक है तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है, तो उसको ट्राई करें एंड आप कर पाएंगे। सर यहाँ पर सर हम काउंट सॉर्ट भी कर सकते हैं उसको। क्या अरमान? सर यहाँ पर हम काउंट सॉर्ट भी कर सकते हैं उसको। अब आपको जो करना है करो, मैंने आपको इनपुट आउटपुट बता दिया है। आपकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे आउटपुट फाइल में सभी रोल नंबर के कितने मार्क्स आए, सम आए, वो करके मुझे चाहिए। ठीक है, मल्टीपल वेज आर देयर बट इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हो। ओके सर। सर यस एक बार वो फिर से समझा दो कि जैसे गूगल कोलैब पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसको गिटहब पे रिपोजिटरी में अपलोड करना है, हाँ, तो जस्ट बता गिव मी दो 2 मिनट्स। जब मैं गूगल कोलैब ओपन करूंगा ना तब उसको बता दूंगा कैसे करना है। ओके सर। चलिए तो क्लास नाउ नेक्स्ट इज असाइनमेंट 3। तो असाइनमेंट 3 थोड़ा ये एडवांस वर्जन है पाइथन का। जो दोज हु थिंक कि हाँ दे आर गुड इन पाइथन, ठीक है, तो उसको करिए आप। जस्ट ओपन द पीडीएफ एंड अगर ये चीज ओपन नहीं हो रही है क्लास, यस्टरडे काफी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है। ओके सो इन दैट केस जस्ट वेट, वो ओपन करने की कोशिश करता है, उसको रेंडरिंग बोलते हैं। बट इन एनी केस रेंडरिंग फेल हो गई है तो इन द राइट हैंड साइड यू विल फाइंड अ डाउनलोड। इसको डाउनलोड करिए तो ये पीडीएफ आप ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। ओके तो सिंपल चीज है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई परमिशन लगाई हुई है, ऐसा नहीं होता है। ओके तो क्लास दिस इज वन ऑफ द, डाउनलोड भी नहीं हो पाता। नहीं हो जाएगा, करेंगे ट्राई। सम इंटरनेट इश्यूज हो सकता है या फिर ब्राउजर चेंज करके देखो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 90% को हो रहा है और 10% को नहीं हो रहा है, हो जाता है। नाउ क्लास नेक्स्ट इज, सर वो वीपीएन लगा के ठीक हो गया था। अरे अब वीपीएन पे कहाँ पहुंच गए तुम यार। ठीक है लेकिन हो गया था कुल मिला के ना, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। तो क्लास दिस इज सम एडवांस पाइथन असाइनमेंट्स, तो इसको आप देखिए। तो आज जैसे हम पांडास करेंगे तो यहाँ पे कुछ मैंने वैल्यूज दी हुई हैं, ये छोटे छोटे कुछ असाइनमेंट्स हैं, इनको गो थ्रू कर सकते हैं। तो दोज हु थिंक कि हाँ बेसिक पाइथन अपने को आती है, तो जस्ट गिव अ ट्राई फॉर सॉल्विंग दीज एडवांस पाइथन असाइनमेंट्स। चलिए तो क्लास दिस इज ऑल अबाउट द असाइनमेंट एंड मिनी प्रोजेक्ट फॉर द डे। एंड ये डेली टास्क आपको समझ में आ रहा है, ये सभी आपको आज कोको एफएम का मैं मेल भेज दूंगा, सभी को कूपन कोड्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है एंड आई होप सभी ने डाउनलोड इंस्टॉल कर ही लिया होगा उसको। तो ये डेली टास्क आपको करने ही करने हैं।
सर एक क्वेश्चन था कि हम लोग आपको अगर पीडीएफ मिल गया बुक्स का जो आपने सेंड किया था लिस्ट, तो पीडीएफ ही पढ़ ले अच्छा होगा कि या नहीं, ऑडियो? मैंने आपको कुछ दिया नहीं है पढ़ने के लिए। बेसिकली क्या है, अभी वहाँ पे लिंक एक्टिव नहीं है, तो यू कैन एक्सप्लोर दैट बुक, पर्टिकुलर बुक इन द यूट्यूब ऑल्सो। ठीक है, अगर किसी ने उस बुक की समरी दी हुई है, आई वॉन्ट कि इस बुक के अंदर है क्या चीज, आपको वो पढ़ना है। ठीक है, बेसिकली लेट्स सपोज आप लीडरशिप पे कुछ करना चाहते हैं, टाइम मैनेजमेंट पे करना चाहते हैं, अपने गोल सेटिंग पे कुछ करना चाहते हैं, तो देयर मल्टीपल बुक्स आर देयर। और ऐसा नहीं कि जो बुक्स मैंने दी हैं वही है, आपको जो बुक्स पसंद आए उसको पढ़िए आप। ओके, चलिए, नाउ कम बैक टू द असाइनमेंट नंबर। जो कल के असाइनमेंट थे, आई होप ये पाइथन के असाइनमेंट एंड चैलेंज क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिए होंगे। ये सबसेट सिलेक्शन प्रॉब्लम ये मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ कोड को एग्जीक्यूट करना है। कॉम्बो फाइंडर ये ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, नाउ लास्ट मिनी असाइनमेंट, जो मिनी प्रोजेक्ट, जो फाइल कन्वर्जन है, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी किसी ने पूछा था। सर आपने अभी कहा कि उनको सिर्फ एग्जीक्यूट करना, उनको सबमिट नहीं करना, जो 2 मिनी सबमिट प्रोजेक्ट्स हैं। एक करो ना, सबमिट कितना बढ़िया रहेगा। सबमिट करोगे तो कितना अच्छा रहेगा, क्या उस पे आपकी गिटहब पे रिपोजिटरी बनेगी ना एक। यस सर। हाँ, करो उसको, उसी को कॉपी पेस्ट करके कर दो। यस सर। चलिए, तो क्लास दिस इज अ मिनी प्रोजेक्ट, थर्ड मिनी प्रोजेक्ट। इसमें मैंने क्या किया हुआ है, आप लोगों को मल्टीपल फाइल्स आर देयर। ठीक है, लेट्स सपोज मल्टीपल फाइल्स नहीं, एक फाइल है आपकी जिसका साइज 200 MB टेक्स्ट फाइल, and you need to convert that particular file to uppercase. Okay, and you need to calculate the time taken. So class, this is one of the comparison study of different programming languages to process text file. तो आपकी रिसर्च का, आपकी एनालिटिक्स का, आपकी एनालिसिस का एक छोटा सा आपके लिए एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट दिया हुआ है। ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या करना है। तो फर्स्ट यू नीड टू क्रिएट 5 फाइल्स of 200, 400, 600 and 800 and 1 GB file. Then write the program. If you know C के थ्रू लिखिए, C++ के लिखिए, जावा आती है, जावा, R, पाइथन, सब चीजें जितनी आती है उतनी लैंग्वेज से कंपैरिजन करिए। बट आई नीड दिस टाइप ऑफ टेबल। ओके, एंड जब टेबल बन जाएगा उसका एक ग्राफ प्लॉट कर दीजिए एंड जस्ट अपलोड टू द गिटहब। सर इसमें इनपुट आउटपुट टाइम को भी कंसीडर करना है, सिर्फ कन्वर्जन टाइम को सिर्फ कन्वर्जन टाइम को, क्योंकि फाइल ऑलरेडी पड़ी हुई है आपके पास ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हाउ टू कैलकुलेट द एग्जीक्यूशन टाइम। तो एग्जीक्यूशन टाइम कैसे करेंगे, लेट्स सपोज आपने एक इनिशियल टाइम पहले ले लिया, आफ्टर दैट आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, देन दोबारा टाइम को दोबारा निकाल लिया। तो जो इनिशियल टाइम आपका निकला था, एंड टाइम, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। ओके, तो जस्ट ये सब में करना है कि सिर्फ पाइथन में करना है सर? नहीं, और सभी ये में फाइल्स करना है। इतने कहाँ से लेके आना है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। 200 MB का फाइल कहाँ से लाना है? सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। यू कैन डाउनलोड द डेटा सेट और यू कैन क्रिएट योर ओन फाइल। ओन फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, लेट सपोज मेरे पास ये ब्राउजर है, तो मैंने क्या किया, कंट्रोल ए कॉपी, इसको पेस्ट करते रहिए, फिर कंट्रोल ए कॉपी। तो दिस इज द मैनुअल पार्ट, आर यू गेटिंग? इसको मल्टीपल 1000, 20,000, 50,000 टाइम्स उसी टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर लो। अब इस फाइल को सेव कर लो। अब देखो फाइल साइज क्या हुआ है। तो दिस इज जस्ट अ रॉ अप्रोच टू क्रिएट अ 200 MB फाइल। अगर गूगलिंग करके कुछ कहीं से मिल जाती है तो उसको ले लीजिए। बट द थिंग इज दैट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम कौन सी फाइल ले गए, ऑब्जेक्टिव है कि प्रोसेसिंग टाइम कैसा लग रहा है। तो आपको मैंने प्रोसेस करने के लिए सिर्फ उस कंटेंट को अपर केस में कन्वर्ट करने को दिया हुआ है। ओके, नाउ जस्ट कंसीडर कि इफ दिस कैन बी अ लॉग फाइल, लेट्स सपोज हमारे पास लॉग फाइल्स है एंड मैंने आपको टास्क दिया है कि वी नीड टू फाइंड आउट कि chatgpt.com कितनी बार हमारी हापर में या उस लॉग फाइल में ओपन हुआ है। ये छोटा सा टास्क है, वी नीड टू सर्च फॉर अ सिंगल स्ट्रिंग। अब उसको प्रोसेस करने में कितना टाइम लगा है, तो दैट गिव यू अ ग्लिम्स कि मुझे वो प्रोग्राम सी में लिखना चाहिए, C++ में, जावा में, पाइथन में, ये सब चीज। ऑल्दो आई एम सेइंग पाइथन एंड आर टाइम कम लेगा, लेकिन दैट इज द प्रूफ कि हमने इसको 200 पे भी कराया एंड 1 GB पे फाइल पे कराया। तो ये चीज आपको करना है। तो दैट इज अ वेरी फर्स्ट एनालिसिस पार्ट एंड ये बहुत तो इजी सर है, हमें कर पाएंगे। ये अलग अलग लैंग्वेज में रन करना है और उनके टाइम को नोट करके
फिर उसके बाद एक डेटा सेट बना करके ये ग्राफ शो करना है बस कोलैब में। बिल्कुल, बहुत सही बात, इतना ही मैं कहना चाहता था। ये ग्राफ सब कुछ पे बन जाएगा आपको सर कोलैब पे? एक कोलैब पे बना सकते हैं, वो हम कल आपको कराएंगे, डेटा विजुअलाइजेशन एंड प्लॉटिंग। बट एक्सेल पे बना के, एक्सेल पे बनाना आपको अगर आता है तो वो बहुत बहुत अच्छी चीज है, एक्सेल पे बना सकते हैं। ओके क्लास, सो दैट इज फॉर द डे। चलो स्टार्ट करते हैं अब। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन क्यों रही? वन पेज राइटिंग वाला कर पा रहे हैं आप लोग? यस सर, Yes, वो sir. हो रहा है, बस वो गिटहब वाला Sir. बता दो, उसमें हाँ, रिपोजिटरी में कैसे। अभी बता रहा हूँ बस। कोई ऐसा एआई जनरेटिव टूल एक्सप्लोर किया है जो आप शेयर करना चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा टूल लगा मुझे? एनीवन? एक किया था Amazon AWS का, तो इतना सीख नहीं पाया, लाइक तो काम किया नहीं, बट आज देखूंगा मैं यहाँ पे। हाँ, कोई नया टूल ढूंढो अपने हिसाब से जो आपको पसंद आ रहा हो। ओके, ऑडियो बुक, इंटरव्यू पजल किसी ने कोई सॉल्व किया है? यस सर। Yes, वेरी sir. गुड, बताओ Yes, क्या sir. था? यस सर। सर वो नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑन चेस बोर्ड वाला। यस सर। अरे वो तो ठीक है। यस सर। सर मैंने किया था वो वाला कि अगर बंदूक है उसको उसमें 2 गोली आपको लगाया गया कंटिन्यूअसली, तो मारेंगे तो क्या होगा, चूज करना हाँ, है। वेरी गुड वेरी गुड। अभी किसी ने सर मैंने भी किया था एप्पल ऑरेंजेस वाला, कौन से बॉक्स हाँ, में ऑरेंजेस प्लस एप्पल्स होंगे। अरे शाबाश शाबाश शाबाश। आई वांट कि एटलीस्ट दो दो कोई सॉल्व करते रहो। So class, if you repeat, if you do daily task until 45 days, आपके आज के वर्जन में और 45 के डेज के वर्जन में कुछ चेंज होगा? यस सर। Yes, sir. तो Yes, sir. प्लीज, यस सर। हाँ तो प्लीज, मैं वही चीज चाहता हूँ, ठीक है, आज के वर्जन में और 45 डेज के वर्जन के बाद आप चेंज हो जाए। सर लेकिन जो रिसर्च पेपर है ना, वो जब हम लोग कर मतलब जब मैं करता हूँ ना, तो कोई टर्म ऐसा होता है जो समझ ही नहीं आता है, तो नो होता है कि वरीज, लिखी दो। नो वरीज, कोई इशू नहीं है। आपको साइकिल भी फर्स्ट टाइम चलाने नहीं आई थी एक दो बार में, है ना? तो एक वीक तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा, 2 वीक तक भी नहीं आएगा, बट आप छोड़ो मत उसको, अब करते रहिए उसको, कि एक दिन का काम नहीं है। बट सर जो इंटरव्यू पजल्स हैं वो जो आपने दिए वही वाले एक्सप्लोर करने के हम कोई और भी कर सकते हैं। देखो, जो मैंने दिए हैं वो बहुत सारी हैं, ठीक है, अगर आपको कुछ और अच्छा रिसोर्सेज मिला तो वहां से भी कर सकते हो, नो वरीज। आपको जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट सबमिट करना है डेली बेसिस पे, ठीक है? आपको बहुत सारी चीजें उसमें, मैंने तो सिर्फ एक रैंडमली सर्च करके प्लेलिस्ट डाल दी थी वहां पे, बट इफ यू थिंक कहीं कहीं और अच्छा रिसोर्स है मुझे भी भेज दो, तो मैं भी उसको वहां पे लिस्ट कर दूँ। ओके क्लास, चलिए। तो अभी हम oops विद पाइथन करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे आप लोगों की क्यूरी है कि गिटहब पे कैसे करना है, तो वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो जस्ट बेसिक्स ऑफ पाइथन वाली नोटबुक को मैं ओपन कर रहा हूँ। सर कोलैब नोटबुक सबमिट नहीं कर सकते क्या? हाँ, कोलैब को ही बता रहा हूँ, कोलैब वाली नोटबुक को ही, कोलैब वाली ही बता रहा हूँ मैं। तो लेट्स सपोज जो बेसिक्स ऑफ पाइथन वाली थी जो हमने कल किया था, अब नाउ दिस, अच्छा उससे पहले आपको गिटहब पे एक रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी, ठीक है? जैसे मैं अभी आपके लिए एक फटाफट बना देता हूँ। फर्स्ट क्रिएट रिपोजिटरी एट गिटहब। तो यहाँ पे क्या? सर हर एक मिनी प्रोजेक्ट के लिए अलग रिपोजिटरी होगी? हाँ हाँ, अलग अलग बनाओ ना यार, वो आपके। सर मैं तो एक ही रेपो में फोल्डर्स के अंदर डाल दे रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, वो आपका सिर्फ एक ही रिपोजिटरी काउंट होगा, आप मल्टीपल में करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे रिपोजिटरी का नाम रख दिया टेस्ट 990। ओके क्लास, नाउ नेक्स्ट रीडमी फाइल ऐड करनी है, नेक्स्ट क्रिएट। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे। रीडमी फाइल क्या होता है सर? हाँ वही बता रहा हूँ, रीडमी फाइल क्या होता है। तो ये रीडमी फाइल होती है, यहाँ पे कुछ एडिट वेडिट करना है तो एडिट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है, जैसे रीडमी फाइल में आपको बताता हूँ, 2 मिनट रुको, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो रीडमी दिस जस्ट एक्सप्लेन यू कि क्या चीज उस रिपोजिटरी में है, ठीक है? जैसे ये लर्न पाइथन इन 2 आवर मैंने आपको कराया, इसको ओपन करिए एंड देखो यहाँ पर मैंने ये कंटेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जाके मैं इसको एडिट करूंगा, तो मैंने लिखा इस तरीके से है,
लेकिन आपको दिख वैसे रहा है। तो यानी कि खाली कुछ कंटेंट भी तो होना चाहिए कि भाई उस रिपोजिटरी में है क्या क्या काम हो रहा है। तो ये जो टेक्स्ट है ये रीडमी फाइल में लिखा जाता है। ओके नाउ अब यहाँ पे कुछ मैंने एक रिपोजिटरी बना दी है, डन, तो जिसका नाम T990 है। अब नाउ कम बैक टू योर गूगल कोलैब, गो टू फाइल, सेव कॉपी इन गिटहब। अब यहाँ से आपसे वो लॉगिन वॉगिन मांगेगा। आफ्टर दैट कौन सी रिपोजिटरी में आपको डालना है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो जो आपकी सारी रिपोजिटरीज हैं गिटहब पे वो सारी यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी। जैसे मैंने बनाया था टेस्ट 990, तो यहाँ पे शो हो गई वो। इसको सिलेक्ट करिए, इसको चेक करिए कि आप उस नोटबुक पे वहां पे चाहते हैं कि ओपन इन कोलैब वाला बटन आ जाए एंड ओके कर दीजिए। दैट्स इट, बस ये सिंपल स्टेप्स हैं। सर जो असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस हैं, हाँ हाँ सर वो भी इसी कोलैब नोटबुक पे एडिट करके ही करना है? हाँ, यस यस यस, सर सेम एज इट इज जैसे आपके ये एग्जांपल्स हैं प्रोग्राम? बिल्कुल यार, बिल्कुल बिल्कुल, उससे आपके रिपोजिटरी का काउंट बढ़ेगा ना। ओके। अब जस्ट सी ऑन द रिपोजिटरी। अब ये जो मैंने वहां से अपलोड की थी, अब वो मेरे इस T990 गिटहब पे मुझे दिख पा रहा है। आर यू गेटिंग? अच्छा, सर फिर प्रोफाइल में अजीब नहीं लगेगा कि एक फाइल के लिए हमने मल्टीपल काफी सारे रेपो बना के रख दिए? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। देखो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे रिपोजिटरीज हैं एंड रिपोजिटरी में मैं आपको जस्ट कर रहा हूँ असाइनमेंट। ठीक है, अब असाइनमेंट में देखो मैंने क्या क्या किया हुआ है। एडवांस पाइथन, चैलेंज क्वेश्चन, पाइथन, मैशअप, टॉपसिस, इस तरह से बना के रखो ना। क्या इशू आ रहा है? आप उसको ये मत बताओ कि सॉल्यूशन है, आपने जो किया है उसको बताओ। अच्छा सा कोई नाम दे दीजिए उसको। यानी उन असाइनमेंट्स का एक ग्रुप ग्रुप बना करके रेपो बनाया उसका? नहीं, अलग अलग करो। अब जैसे मिनी प्रोजेक्ट इस तरह से सबमिट करो, मिनी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, जैसे मार्क्स आपको ऐड करना है, इसका एक मिनी प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, टेक्स्ट फाइल कन्वर्जन हो गया, मिनी प्रोजेक्ट ऑपरेटर फिटिंग हो गया, कॉइन चेंज प्रॉब्लम हो गया, ये सब चीज में आपको कॉम्बो फाइंडर हो गया। तो कोई भी अच्छा सा नाम दे दो उसको, क्या इशू आएगा? तो कुल मिला के आपको रेपोजिटरी काउंट बढ़ाना है। तो आई होप इस सबको सर समझ में इसके आया। सबमिशन के लिए हमें सिर्फ वो लिंक अपलोड कर हाँ देना है बस यहाँ बस पे। बस, जो गिटहब का लिंक बनेगा वो मैं चाहता हूँ आप लोग सबमिट करें। दैट्स इट। ठीक है सर ये प्राइवेट रिपोजिटरी में ऐड नहीं करता? प्राइवेट में उससे तुम्हें ही विजिबल रहेगा ना। और अच्छा सर, प्राइवेट में, लेकिन लेकिन मैंने ऐड नहीं करो, कह रहे ऑथराइजेशन फेल्ड दिखा रहा है। नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया कि प्राइवेट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तो फर्स्ट आपको वो पब्लिक करना पड़ेगा, फिर अपडेट करके फिर उसको प्राइवेट कर दो। ओके सर। तो सर जो सिर्फ इंटरव्यू पजल्स वगैरह हैं वो भी अपलोड करनी होगी उस पे? हाँ सर उसका वीडियो ही अपलोड करना है सर, पजल का। पजल का सर, पजल पजल के एक काम करो, पजल को कैसे सबमिट करना है, पजल के बारे में एक डिस्क्रिप्शन लिख दो अपने आप। ठीक है, और उसके बाद आपका सोल्यूशन, बस। तो वहां पे कोई कोड वोड, गूगल कोड कुछ नहीं करना है। आप उसको बस एक सोल्यूशन के फॉर्म में रख दो, रीडमी में, कि ये प्रॉब्लम थी और उसका हमने सोल्यूशन दिया है, इस टाइप से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मतलब पजल भी आप उसे गिटहब में करना, मतलब जितनी भी चीज है उस सबको अरे गिटहब में हाँ, गिटहब में करोगे तो आपका रिपोजिटरी काउंट बढ़ेगा ना भाई, तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अभी नहीं रहेगा, लेकिन इंटरव्यू में या फिर आगे जब दिखाएंगे तो वो अच्छा रहेगा। चलिए, तो टुडेज टॉपिक इज ऊप्स। तो एक काम करिए, ऊप्स। सर एक असाइनमेंट के लिए एक रिपोजिटरी बनेगी? हाँ हाँ, एक ही बनाओ। ठीक है, अच्छा वहां पे कुछ पूछा जाता है आपसे कि उसका सीरियल नंबर लिखो। तो सीरियल नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे असाइनमेंट 3, 4, ठीक है, नीचे आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे तो 1, 2, ये नंबर डालने हैं वहां पे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, oops. So oops will be covered by Adil. So Adil. So good evening, everyone. गुड इवनिंग। Good evening, sir. Good Good evening, evening, sir. sir. Good evening, इवनिंग sir. सर।
Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. So, is my screen visible to you all? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Should I zoom it or is it okay? So please zoom in So a you bit. please zoom it. Is it fine now? Yes, sir. Yes, sir. All right. So, raise your hands. How many of you know what OOPS is actually? Sir, OOPS is object-oriented programming. Right. Like, I just wanted to confirm if you guys know what actually OOPS is. So, Yes, yeah, sir. great, Yes, great. yes, Yes, sir, we know. yes, sir. We have done it in C++. Great, 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 great. Sir, So, could you tell us what OOPS is? We're from biotechnology. We have no idea. all right. So it is object-oriented programming, as many of you just mentioned as well. So basically, it is the essence of programming, which is like considered, for example, in the second week of this course only, you would be studying deep learning networks and everything. So their normal Python will not be able to make it. So what you will be needing is the object-oriented programming. For example, we have two deep learning frameworks. One of them is TensorFlow and one of them is PyTorch. So in TensorFlow, simple Python would work, but nowadays PyTorch is being promoted just because of the fact it uses OOPS. And OOPS is one of the, like it follows 5 major principles: polymorphism, inheritance, encapsulation, data hiding, and the classes and the Abstraction. objects. Yeah. So these are the principles which I will be teaching you today. So let's go ahead and two things. First of all, keep executing each and every cell. All right. So in case you miss any, just or if you think that I am fast or slow, just let me know. And for any queries, you can also raise your hand, or you may drop it in the messages box to not to me, but to everyone, or to Raghav Garg, who is the other co-host. All right. So yeah, let's begin. So just keep executing. I will not execute. I have the outputs already printed here, but you guys execute each and every cell as I proceed. So yeah. Should I start? All good? Have Yes, you sir. all opened the same link? Yes, sir. Yes, sir. All right, great. So coming on to 1.1, it's just the declaration, which is the list of attributes, and SC1 here is a particular object and SC2 is another object. So what I'm specifying in the list are the parameters which I'm going to be passing in the class. So here is the syntax of class. So how we declare it is, first of all, we write the keyword class and then we write its name. So now in a class, we have two types of attributes. One of them is called instance attribute and the other one is called class attribute. So what are instance attributes? Instance attributes are those which are, for example, we have 10 objects of a class. So we have individual copies for each object of those instance attributes. Whereas the class attributes are the ones which is a common copy for each and every object present out there. So coming on with the example, the class attribute here is alias, which is a common copy for each and every object of this class. And coming on to these 4 variables, these are the instance attributes which are present. For example, if we have 10 objects, so they have 10 copies each. So yeah, so now we start with the first function, the basic function, which is included in each and every class. So it is the init function, as you all can see. Init function, the ones who have already done C and C++, it is analogous to the constructor. We all have done constructor in C and C++ to initialize the variables which are present in the class. So in Python, we call it the initializer function, which is abbreviated as init. So one more thing which you all need to take care is to mention first parameter as self.
So this self signifies that, for example, if we pass a parameter, like here we are passing the parameter. So after the declaration, it would signify that the class for this function is of a class. The self keyword basically represents that this function belongs to some class. This is not a function which is declared outside a class or something like that. So is everything clear till here, or any doubt? So it's clear. All right. So start executing side by side. I hope you have executed everything till 1.3. So yeah. Yes. Coming on to instance of class. Instance of class is the other name for object. So here we are creating the object, and this is the name of our class, which is software engineer. And this is the variable of the object, and we are passing all. Now, just make sure that you keep the order of these parameters same. All right. So after that, we execute this print statement, which prints max and 20, just because we wrote se1.name and se1.age. And here it gets initialized to name and age. Right. So as you all know, like the constructor is called automatically as soon as we declare an object. It is same with C++ and now in Python too. All right. So any problem in section 1? And I hope you have executed each and every cell. सर Yes, एक बारी sir. फिर से रिपीट कर दोगे? क्या रिपीट करूं? एक बारी फर्स्ट सेल पूरा एक बारी रिपीट कर दो. फर्स्ट सेक्शन? हाँ जी, फर्स्ट सेक्शन एक बारी जल्दी फर्स्ट जल्दी. सेक्शन में कुछ नहीं है, बस इनिशियलाइजिंग है जो कंस्ट्रक्टर होता है आपका सी और सी प्लस प्लस में. सो इट्स नथिंग बट जस्ट टेक केयर द यूज ऑफ द वर्ड सेल्फ, which is different, which is not like according to the conventional C++, it is not there, but here we use self just to signify that this particular thing belongs to a particular class. Rest just also side by side, when I pause, keep reading the comments that I have left, the green ones. सर सेल्फ सेम है दिस कीवर्ड की तरह? Sort of, but not exactly, just because this is particularly for a, like it is restricted to a particular object, but here each and every object is signified with self and not like any other keyword or so. This is particular, like this is used, for example, we have 3 objects. So the nearest object which it points to, or I mean, the nearest object in the scope is referred with this keyword, but self is the common keyword for each and every object out there. सर एक क्वेश्चन था कि जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें जो सारा कोड आपको सेम ही है, लाइक मींस एक ही लाइन में है, वो अलग अलग नहीं है, लाइक सब पार्ट में. पार्डन कैसे? लाइक जो 1.4 है उसमें जो SE1 इज इक्वल सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैक्स 20 जूनियर और 5 लिखा हुआ है, तो लाइक जो IDE है उसको पता चल गया ऊपर के कोड से ही ना कि वो नेम है, एज है. वही आपको बता रहा था कि we need to keep the order same as we declare here. As we declare the initializer function, we declare the parameters in the same order and pass it in the same order. Now, if we swap this junior with 5,000, it will throw an error because in place of junior, it expected a string and we are passing an integer. So it would throw an error. कोलैब में हम जितने भी कोड ब्लॉक क्रिएट करते हैं, जैसे 1.4 आपने क्रिएट किया एक कोड ब्लॉक और 1.3, तो सारे कोड ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं. Exactly. Basically, we are executing the code in parts. What we do in Dev C++ or other online platforms, we execute the code at once. Here, what we are doing is we are executing the same code but in parts. So it is that's why I'm saying it is important to execute the previous cells just to get the output of 1.4, just because they're interlinked. So yes, coming on to section 2. Here, so one more thing, the code will get repeated just for your convenience, so that you do not get confused, and so that the class we are declaring is clear at every point you are watching it. All right, so here we have created 2 more objects with the same name, so the previous ones will get overwritten, and
here the function, now see, now here I have not specified the self keyword. So just because of the fact that this code function is being declared outside the class, right? So also raise your hand who all know what an F string is. Basically this. Could you, the ones who understand what this actually means, this thing. All right, I'll explain it. So basically, we in C and C++, we use %d or %s for including a variable in a particular printing string. So in Python, we enclose that particular thing which we have to, for which we need a variable's value, we enclose it in a curly brace. See, if I delete these curly braces, it will be printed as it is. But now that I have enclosed it in a curly brace, the value of this particular variable, SC, the position 1 of the list SC, will get printed, right? So see, I have executed it here only. I have called code with SC1 and it says Max is writing code just because SC had on its first position written Max, right? So this is it. सर वो F का मतलब क्या था स्टार्टिंग में? F is here just to signify that we will be using the curly braces in the string. So like, format string. Yeah, format string. Exactly. See, now even the curly braces don't make any sense. They've turned in the same color like the other code. So we put F to format the string so that we could tell the compiler that we are using a key, we are using a variable in this particular string, right? सर एक क्वेश्चन था, वो ऊपर का एक डाउट था 1.2 का कि 1.2 में आपने लिखा था alias is equal to keyboard magician. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कुछ ऐसा ही है कि इसका कुछ ये था कॉन्टेक्स्ट? No. This is just a user-defined variable. This is nothing else. Nothing. It does not have a significant. It was just to make you understand the difference between the class attributes and the instance attributes. Nothing else. All right. So yeah. First of all, please execute everything until 2.1.2 and let's come on to 2.1.3. So basically here we'll be seeing the functions, different types of functions that we have. So till now we've been only passing the self parameter, which signified that we don't have any personalized arguments of a function. So now we'll be jumping on to the parameterized function, which is code in language. Here we are passing language as a parameter. So we want that so we specify the parameter when we create an object and call this function code in language, as you must have all done in C and C++. And again, we print it using the same F string as we have done it before, right? So coming on to the returnable functions, what it does is basically, if we want to return a string or something, we use returnable function. The returning variable may be of any data type. I have used a string here basically, but it may be of any data type. And yes, returnable function can also accept arguments. That's not a hard and fast rule. So yeah, any doubt up till here? Sir? Yes. So can you please explain what are we exactly trying to say when we write self everywhere? Signifying that that particular attribute belongs to a particular class. Okay, sir. If I write simply name, it would never search the class, even if I mention the name of the class, and it would look for a attribute name somewhere else in the code outside the class. Okay, sir. Thank you. Right. So again, the same thing, printing, as I told you, the code would be repeated for your convenience. So yeah, now see, we have executed sc1.code and sc2.code. So .code function simply says self.name, that is the name in the sc1 is writing code. So Max and Lisa, that's the significance of F string, which I just mentioned, right? And now coming on to the parameterized functions, here we are passing language as a parameter, as I have already told you, right? So we get
this thing printed as here, name is equal to this, age is equal to this. All right, sorry, this is being called in the next cell. We have, just a second. Yeah, so this is code in language, and this is the cell which executes information and gives us all information, basically returns what we want. So yeah, execute everything until 2.1.7 and let me know if you have any doubt. So 2.1.5 is giving some error that at software engineer object has no attribute code. Yes, sir. Yes, sir, same. Just a second. 1.7. Yes, sir, 2.1.5. So 2.1.6 also. It might be the reason that you have left some of the other cell and you are not executing whole cells. So the class might have not been declared. Fine. Yeah, right. So just check once and let me know if you still face any error. Yes, sir, after executing 2.1.3, it is getting like it's not giving there. Yeah, exactly. That's why I told you just execute each and every cell along with the flow. So any doubt up till 2.1.7 or any conceptual clarity needed? No, sir, it's clear. All right. So you could read 2.1.8 for your own knowledge, although I've already explained it. So again, 2.2.1 and 2.2.1 includes just the declaration, just for the convenience, and 2.2.2 as well. Execute it, please. And after executing 2.2.3, just come here. Let's start from here. Let me know once it's done. Sir, done. All right. So we have seen the initializer function. So we declared it with double underscore, right? So the double underscore functions are the built-in functions of Python, which we use, and these are built-in functions. For example, I have declared a function underscore underscore str underscore underscore. So even if I have not declared this function, I can use this function with its predefined implementation. So these are the built-in functions and are also called double underscore functions, which are whose use is already defined in Python. We cannot change its application, but yes, we can modify its application. For example, the better example to explain you guys would be this function. This function basically compares two objects and checks if both are same or not. For example, our object has a parameter, say name and age. If we pass in two objects, so it will compare if the name and age of two software engineers were same or not, and returns true or false. It's a Boolean type function. And what I have modified here after defining is that to not compare whole object, but only the name and age and not the salary and other things, right? Same goes with the string. Even if I have not defined it, I can always use it. But now that I have defined it, I'm just converting the object into the string and returning its name, age, and level. So any doubt? Sir, I couldn't understand the last part. All right. So basically what I'm saying is the double underscore functions are the inbuilt functions of Python. So they have their predefined implementation already defined in Python, but I can always modify the application, but not change the application, right? So what equal function, I mean, double underscore EQ function does is it compares two objects, the whole objects. Like if an object possesses 4 attributes and one function, so it would compare that whether 4 attributes will have equal values and not. And if we execute a particular function using 2 objects, whether that function will return same value or not. But here I have modified that function by just comparing 2 things and returning the result. Focus. And this Sir, is it predefined same function. as operator overloading?
Not exactly, because in that operator overloading, we could modify the application or even change the application. But here we can only just modify the application. सर ये जो हमने str बनाया और eq बनाया, ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाया कि क्या है ये फंक्शन? कंस्ट्रक्टर सिर्फ डबल अंडरस्कोर इनिट फंक्शन होता है बस. That's only the constructor. Don't confuse these things with constructor. Yes, constructor also has a predefined thing, and I have just declared here just for your convenience. Although if we do not declare it, you must all be knowing that when we declare an object, the constructor already gets initialized. So again, str and equal are one of those functions which are predefined, and initializer is also one of those functions. But yes, all are not constructors. Only initializer is the constructor. Right. So any doubt, or is it clear whosoever asked this? Sir, ये functions है यानी? Exactly, these are functions. So you must have learned yesterday to define functions with the keyword def. So basically these are also the functions, and these are predefined. The ones which we like, the ones preceded and succeeded with a double underscore in their name are the predefined functions, and the rest are the defined functions which we define as a user. Okay, sir. Okay, sir. Yes. So I hope you all have executed till 2.2.4. So any doubt in section 2B? Execute till 2.2.5 each and every cell. Don't miss out any cell. Should I proceed? Yes. Yes, sir. All right. So this 2C part of the code is a bit advanced, so be careful, and like be careful with the syntax majorly. Rest everything is almost the same. So again, here we declare the function and the objects SE1 and SE2. So directly come here. So as many of you were asking the significance of self keyword. So there may be a chance that by mistake you forget to mention self keyword in a function which is being declared in the class, or you deliberately mentioned it. Forget to mention it. So although it is not a good practice to use this decorator, but just to introduce you all with the concept of decorators, I am using this particular decorator here. So what this particular decorator does is, so basically this is a decorator. So what this particular decorator does is, for example, this is the class software engineer. So we are defining a function in this particular class without the self keyword. So this decorator basically bypasses that self keyword and does not give an error. Although if I would comment this statement and again call this function, this would generate an error, as you all can see now. So are you guys clear with the function of the decorator at least? Sir, can you please once more? Please repeat, sir. Yes, sir. Please repeat. All right. So basically what decorator does is, first of all, you all know that when we define a function within a class, we use the keyword self. Is that clear? Yes, sir. So in case we forget to mention self keyword, or for example, we do not mention it deliberately, sometimes in higher languages, we do not mention. So to bypass that error, we use this decorator keyword decorator to bypass that self error. And now that I have not mentioned self, ideally it should have thrown an error, but now that I have mentioned this, the error is gone. That's what I am trying to explain. That basically bypasses the error. Sir, so basically it's analogous to the namespace in the C++. Exactly. And sir, are there more type of decorators, or it's just one that we always use, the static method one? That would be covered in the 6th section. So wait. Oh, okay.
but yes, the use of this decorator is not recommended, just because to fulfill the essence of Python, you should always use self keyword and not use this decorator. It is not a good practice, although. So yeah, so execute it 2.3.4 as well, and any doubt, let me know. So see here, entry salary, we are calling it here, and just a second, in 2.3.6, I'm still not getting any error, despite not using a self keyword, which should have been used. So we have to write this alias every time. Alias? No. That's what I'm saying. For example, in C, you always specify the data type. So in Python, it is not the case. So it is simply a variable. Alias is a simple variable which I have declared just to make you guys understand the difference between instance and class attribute. Nothing else. It has nothing to do with the flow of programming. It is just if you want a common copy of a particular variable in your program, so you declare it with any name. So it is not any hard and fast rule to give the same names as I have given. These are just the names given by me. Although this decorator static method has its name, but rest all are non-keywords and just the names given by me. All right. So yeah. So as we execute this entry salary, so you guys must be wondering what is this. So this is the address at which this particular class, this particular function is being stored. So this is the starting address of the memory from where the storage of this function starts, right? So I hope you guys have executed everything till 2.3.6, and let me know if you are facing any issue or any error. Sir, could you explain 2.3.5 once? All right, it is basically the implementation. For example, here we are comparing both. So that underscore EQ function, which we have defined above, is called like this. It's double equal to, as one of you mentioned that it is operator overloading. It is somewhat that, but not exactly that. Okay, sir. So whenever we write double equal to, the EQ function gets called and gets executed. So in my case, now that I have defined SE2 and 3 all same, and we are comparing only the name and age, it returns true, which is printed here. Okay, sir. Right. So any other doubt in section 2? Sir, one more doubt. In 2.3.6, where are we giving the command which says that we want to specify the position at which it's stored? Couldn't get you. Sir, in 2.3.6 output, we are getting this random number, which you said is the position where the variable is stored, right? Mm-hmm. So where are we giving the command in which we are saying that we want the position? All right. So this is sometimes get printed in the returnable functions. So sometimes when we call returnable functions, so we have like you mentioned namespace. So we have a particular inclusion that we include above to restrict its showing in Python when we use oops. Okay, sir. Which I have not included. Okay, sir. All right. So should we move to section 3? Yes. Okay. So yes, now coming on to the third most important principle of oops, which is inheritance. So inheritance, as you all must be knowing, there is a parent class and there is a child class. So what child class does is derive the characteristics of parent class, which is nothing but that. Now listen carefully. The child class derives only the instance attributes and instance methods. It does not derive the class attributes. All right. So basically, whatever there is written in the parent class, everything is derived by the child class. So yes, so we are going to see 3 concepts in inheritance. First of all, how to extend the usage of class. Basically, it's one of the applications of inheritance, and how to override a class. So what override means is, for example,
we have a function named work, right? So that function is defined outside a particular function as well, and we have it when we have a function with the name work, which is being defined in the child class as well. So now when we call a child class, so which work should get executed? Is it the one which is global to the whole class, or is it the one which is restricted to a particular child class? So now that we will see in this section. So yes, let's proceed. So again, here we, yes. All right. So here we are initializing it. All right. So here goes the initialization of instance attributes and instance methods. Methods is the other name for functions. I hope you are all reading the comments as well, which says the child class inherits both in instance attributes and instance methods as well, right? So coming on to 3.1.2, this pass keyword just signifies that I have nothing to write in the class, and it is just for the sake of implementation I'm showing you. So the syntax of the child class is class, name of the child class, and in the bracket we name the parent class. So parent class here is employee, and we have written its name here. So this is the syntax of the child class, and we have made two child classes. One is software engineer and one is designer. Please execute it side by side. Now we are creating two objects. One of them is software engineer. I mean the abbreviation SE, which is not any hard and fast rule. You can create any name, and we are passing it and printing se.work, d.work, and as you can see, this work function and this initializer function gets inherited to the classes software engineer and designer, and whatever the content is there in these functions gets executed, and we can see the output on the screen. So the ideal output should be max 24. That is, the initialization is being done and max is working when we execute se.work. So we are printing d.name, d.age again, and Philip is working d.work. D.work says self.name is working. So name of that particular object of that child class is working. All right, should I proceed? सर जो सा कंस्ट्रक्टर होगा वो बेस क्लास वाले भी कर लेंगे इनहेरिट इनिट वाला जो कंस्ट्रक्टर है इसका बेस क्लास में तो वो डिफाइंड ही है ना कंस्ट्रक्टर वो तो चाइल्ड क्लास की बात हो रही है कि चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर इनहेरिट कर लेगी अनलेस एंड अनटिल वी डिफाइन चाइल्ड क्लास का अपना कंस्ट्रक्टर जी ओके सो कमिंग ऑन टू 3b which will actually give you a more clear picture of what inheritance actually is. This was just a baseline thing. So now, first of all, for example, this is the constructor part of the parent class. Now you want each and every attribute, not each and every attribute, but some specific attributes of this particular class to get inherited to child class, but not all attributes of the initializer, as you were asking about the constructor. So here we write this statement just to signify that this particular software engineer's child class would inherit only name, age, and salary of the parent class. Is it clear? So this is the syntax. You need to memorize this, and what it is doing is like we have no there's no use of writing this whole thing again, but just writing this statement which creates the initializer for software engineer class as well. So now you all must be wondering what is the need of this, because as soon as we create the child class, these attributes must have been derived by the child class, right? So why we have done this? Just because we wanted one more attribute restricted to only this particular child class, which is level. So now that if I would have commented this statement, now this child class would have only possessed
the level attribute, but I wanted that it should also inherit the other attributes which were there in the parent class. So I have written this statement. Any doubt up till here? Anyone? सर इसमें कुछ पब्लिक ये और वाला प्राइवेट समझा जैसा नहीं नहीं। होता? Sir, why only level attribute? Why only level? It's just, again, don't go on the names. It's just like I wanted to show that the significance of super init. Super init basically signifies, first of all, if I comment this, this would mean that the software engineer has only a level. That means it has only a variable which is level. It does not have name, it does not have age, it does not have salary. I will have to explicitly write this statement now just to make the initializer containing both these and this. All right. बट सर ऊपर वाले कोड में हमने एक बार में कौन बोलो? बट सर ऊपर वाले कोड में हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया था, फिर भी वो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर रन हो गया था। एग्जैक्टली वहां पे पेरेंट का होगा था, अब यहाँ पे भी पेरेंट का हो जाता, बट यहाँ पे हमने मॉडिफाई कर दिया ना इसका कंस्ट्रक्टर, हमने इसको एक और वेरिएबल दे दिया, तो अब इसका कंस्ट्रक्टर सिर्फ ओवरराइट हो गया इससे। तो अब हम चाहते हैं कि वो भी इंक्लूड हो जो पेरेंट क्लास का था, तो हमने ये लिखा है, बट अगर हम नहीं चाहते तो वी कैन ऑलवेज कमेंट इट और नॉट राइट इट। सो दिस इज बेसिकली अ शॉर्टकट to not write all of these things again in the child class when you are defining a particular constructor for a child class separately, but just write this particular statement which serves the same purpose as these 4 lines. Yes, so the level is not included in the child class? Level is included in the child class. So what our objective was is to include both of them. So just because I wanted to add, first, just a second, I'll explain you it. I will explain it to you with the designer example. Just a second. So now see, you have both the classes, designer and software engineer. So here I have just written class designer employee pass. So first of all, this is the child class declaration, right? So now that I have written just pass, it will use its default constructor, which is that of the parent class. All right. So it would use each and every instance attribute and each and every instance method of parent class. But now that I have declared this explicitly in a particular child class, so the compiler would assume that this particular constructor needs to be executed, and it would forget this particular constructor for the child class software engineer, right? But I wanted to include that too and add a particular variable which is level. Just because of this addition of level or addition of a particular variable, I included the super, just because I wanted कि जो parent वाली भी characteristics हैं instance attributes की, वो भी inherit हो जाए. Is it clear now? Sir, can you explain again the use of super? Okay. So basically, super कुछ नहीं कर रहा. It is what it is doing is कि जो हमारा यहाँ पे level declare करके constructor parent class का overwrite हो गया था. Overwrite, WRITE, right? जो overwrite हो गया था constructor, तो अब software engineer के पास सिर्फ एक level रह गया था. इसको पहले लिख देता हूँ, रुको, मैं उससे शायद ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको. ठीक है, अभी ये छोड़ दो. तो अगर अब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर का SE1 ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एंड देन आई एग्जीक्यूट, I mean sorry, if I now execute, I now create an object and try to call name, age or salary, it will throw an error. Why? Just because I have defined this particular child class own constructor. Are you getting till here so that I could proceed? Yes, sir. Yes, sir. All right. So now when I uncomment this, so this would now also include, in addition to the particular attribute here, this would also include this thing. Is that fine now? So if you want to add a new variable, we'll have to do this every time. Exactly. Yep.
any variable, any sort, or मल्टीपल कंस्ट्रक्टर फॉर्म किया सकते हैं अगर एक 3 कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग वाला कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कर सकते हो, बट उसमें फिर आपको डिफरेंस इन पैरामीटर्स है ऐसा कुछ रखना पड़ेगा, मतलब एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो रखना पड़ेगा ना। अगर आप इसमें पास भी लिख दोगे और साथ साथ इसके तो मतलब कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो जाएगा। पास भी लिख दोगे मतलब पास का तो सिर्फ ये मतलब है कि बस मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वो पेरेंट की एट्रीब्यूट्स डराइव कर ले और मैं अपनी तरफ से कुछ एडिशन नहीं देना चाहता इसको। थैंक यू। ऑलराइट, okay, so here goes the implementation. se.work, se.level. Now I cannot write, you guys can try as well. If you write d.level, it will throw an error just because level is restricted to the constructor of software engineer only. Are you guys understanding it now? What is the importance of the extra attribute? And Yes, sir. And this print statement is getting executed just because of the fact that I included the super statement. Had it been only level, then this particular statement would have thrown an error. All right. So, sir. Yes. 3.2.4 कुछ एरर दिखा रहा। आपने पुराने सेल्स रन नहीं करे होंगे, बीच में मिस कर दिए होंगे। कर लिए थे, तीनों कर लिए थे। क्या एरर आ रहा है? Implementation of child class using instance attributes and methods of parent class. एक बार री-एग्जीक्यूट करो, अगर आपने कोई चेंजेस किए थे तो वो या तो सेव हो गए हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ एक बार। ठीक है सर, इसमें प्राइवेट पब्लिक नहीं होता कुछ? अभी आएगा अभी आगे आएगा वेट। So you can read 3.2.6 for your clarity, although I have explained it already. Should I move to 3C? ये एक्सप्लेन कर दो जो लास्ट में SC.level वाला। SC.level वाला। SC.level कुछ नहीं है, बस ये बता रहा है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसके कंस्ट्रक्टर में एक वेरिएबल है दैट इज कॉल्ड लेवल। बस इट इज अ नेम ऑफ अ वेरिएबल। आप लोग इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि C++ में वी ऑल्सो स्पेसिफाई द डेटा टाइप विच सिग्निफाइज दैट वी आर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, बट इन पाइथन वी merely write the name of the variable and simply give it a value, and according to that particular value the compiler automatically decides what data type is to be allotted to Python. आप लोगों ने अच्छी तरह कल वो Python in 2 hours करी थी ना? Yes sir. फिर तो ये डाउट नहीं आना चाहिए। चलो एनीवेज कोई बात नहीं, अगर और कुछ है तो बताओ, नहीं तो फिर 3C पे चलें। Just a second. So should I start 3C? Yes sir. All right. So now we extended the attributes. Extended the attributes meaning we added the functionality of attributes to the child class. For example, we used level as an additional attribute which was not present in the parent class, but a particular child class and not all child classes. So this is basically one of the use cases of inheritance. For example, a designer would, for example, draw a sketch, or we define a function draw for it. But for a software engineer, we define a function called debug. So both are different things and are restricted to only the respective domains, right? So this is a sense of inheritance, that we derive the common characteristics and make individual changes in the child class which are restricted to a particular domain. All right, so now we'll see what I have just said. So I hope everybody has executed each and every cell till 3.2.6.
Yes, sir. Perfect. So coming on to 3.3.1, again we define the parent class, the child class. The child class now contains an extra function which is only there in the only there in software engineer child class, which says debug. Now here what we are doing is this debug function is only restricted to this particular child class. Am I clear till here? Yes. All right. So in the same way, the designer child class would contain draw, which is only restricted to the child class designer. And here, as you all can see, I have given an extra attribute, the instance attribute, extra attribute, which is only restricted to this class. But here I just wanted कि जो name, age, salary level है, वही inherit हो. All right. So here is the implementation. Please start, also execute it side by side. So yeah, here we see that se.level junior, but if I will execute d.level, it would throw an error, as I have already mentioned above. Please execute it. Yeah, so now see se.debug. Now debug function is only restricted to a software engineer, and draw function is only restricted to the designer part. So we get Max is debugging, Philip is drawing. Debugging, I have written it explicitly. You could always write anything else if you want. Here you go. Here's debugging and here's drawing. All right. So this is how we extend the functionality of a class. And the previous concept was the extension of variability of the class. Variability means giving an extra attribute in the initializer, and whereas the functionality means giving an extra function to the child class, which may or may not have been derived from the parent class. All right. Should I move on to the third concept of inheritance? Hello, am I audible? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right. So I hope you all have executed each and every cell and haven't missed anything until 3.3.6. Yes, sir. Yes, sir. Perfect, perfect, perfect. So coming on to 3D. Here we would be discussing the particular concept of which I have talked in the beginning, which is that I have defined a work function, a function named work in the parent class. All right. So now I have defined a work function separate, which is for this class, which is a child class, and I have defined a work function which is for this class. So we have three functions named same, which is work, and each and every child class has its own work function, and parent class has a work function of itself, which also gets derived. Now I have a question, so I am opening the chat box. Answer. If I call this work function, so which work function should be executed? Is it the one particular to a child class, or the one which is defined in the parent? सर जो चाइल्ड क्लास में डिफाइंड एग्जैक्टली जो चाइल्ड क्लास में डिफाइंड है वो पर्टिकुलर जो उस मतलब जो डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच वी आर कॉलिंग. इफ यू आर कॉलिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्लास, so that particular work function would override, that's the keyword, that would override the work function defined in the parent class and would get executed. So let's see the point of difference and see the output accordingly. So the work function of employee class says that a particular employee is working, whereas software engineer says coding and designer says designing. So here goes the initial implementation, but yes, see, as soon as we execute it, Max is coding, Philip is designing. So are you getting the difference what I was trying to explain? Sir? Yes, Jamin. Sir, so what if we do not define work function in the parent class?
Would it give an error? No. So that would not give an error, but it is just to show you the concept of overriding functions. So if we call, for example, I have the employee class. If I would write employee.work, so it will not check the child class, but execute the work function which is being specified in the parent class. Okay, sir. Yes. So whenever the child class is called, the function with the same name in the child class overrides the function in the parent class and gets executed. And had it been the case that there is no child class or anything unrelated to child class, so the function already defined in parent class will get executed. Is that clear now? Yes, sir, it is. Perfect. So please execute everything until 3.4.5 to avoid any error. Should I begin? Yes. Okay. So extension of inheritance. So this is basically the fourth principle of fourth implementation of inheritance and fourth principle of OOPS, which is polymorphism. One aspect of polymorphism we have already covered. If any of you could guess, we have just covered it. Function overloading. Exactly. We have already implemented function overloading, and what it is we are using same name of function at two or like one or more different places, right? One or more scopes, basically, not places. We would say scope. So the work function, we have three work functions, right? So one of them has a scope in whole class, whereas the other two have a restricted scope in their particular classes, right? So you understand this point? Sir, but in function overloading, the number and type of parameters are different, and in the work function, same. Yeah, but that's what I said. We have just covered one aspect. This also comes under function overloading, but function overloading obviously has a point of difference, which may be in the form of its return type or the parameters we pass. Yes, sir. Yeah. So starting with polymorphism, we wrote the same parent class as before. We are writing the same child classes. Please start executing it side by side. Now, what's the catch here? So first of all, let me introduce to a new concept, which is list of objects. So as you guys must have done it yesterday, that this square bracket initializes a list. And what this list contains, basically three objects, and one of them is this. Is it clear till now? Of type software engineer and designer, of class type. Is it clear till now? Any doubt in the declaration part or the implementation until now? Anyone? Sir, can you please repeat once? What should I repeat? Which part are you asking me? Sir, from the part where you said there's a catch over here. All right. So what is the catch here is we are defining list of objects. Till now, we have stored the object in a particular variable, but here we are defining a particular list which contains three objects. So now what we will do is we will iterate over this list to make sure that each object is being called, which you will see in the further cells. So for what the point of difference is there is that here we have a single variable, which is a list of objects, whereas in the previous implementations, we were giving separate variables to each and every object. Is the point of difference clear? Yes, sir. All right. So here I have created my own function whose name I have given in myself. So I have passed the list, which is employees in this function, and iterating it. So you must have done this concept yesterday for employee and employees, which means for a particular variable, for a particular object in our case, in employees, which is a list, employee.work. Now employee.work would do, what would employee.work would do is that,
For example, here we have a software engineer. So it would call software engineer's work function. And if we have a designer, it would call designer class work function. So this is just the declaration of that function. And here I go with the calling of the function and hence getting the output. Employee.work does nothing but just prints what I have mentioned is a print statement. It just executes that, nothing else. So motivate employees, which is the name of this function, and employees is the list we are passing. So this list is this. It is just another way of writing so that you can save the lines of code. And for example, when you go like on industry level, we always save lines of code and try that our code consumes least memory. So this is one of the ways of writing to, for example, a list would always occupy less space rather than variables, right? So 3 variables versus 1 variable, although not much of a difference at this point of time, but if we talk about industry standards, there's a huge difference in space when we have thousands of variables or like just hundreds of lists. Getting my point? Yes. Okay, so now coming on to the private instance variables. Now comes the private variables, protected variables. So should I start? Provided that you all have executed till 4.5 each and every cell. Yes, sir. All right. So this is the last section before properties. This would cover basically the protected and private variables or the protected and private methods, which is the functions of a particular class. All right. So this reflects the concept of encapsulation, in which we present the desired details but hide the unnecessary details or the computational part. For example, you click a picture using a camera, so you just get the output, but you are not aware of the fact what all pre-processing and everything is going on, right? So that's one of the real life examples of encapsulation. So we would be implementing it here. Now, some of the sources say that private instance variable starts with a single underscore. For example, I can write self.salary or self._salary, right? So what the point of difference is in the public, private and protected is the number of underscores we use while naming the variable, right? So if I name the variable only salary, it would be a public instance attribute. And if I declare it with a single underscore, it is a protected. And if I declare it with a double underscore, it is a private. Clear until here? सर कमेंट गलत नहीं लिख दिया फिर आपने? वो एक सोर्स के हिसाब से है ना, जो मैक्सिमम बुक्स है वो आपकी कंफ्यूजन के लिए है कि मैक्सिमम बुक्स इसको प्राइवेट बोलती है, बट अगर आपको दिखाऊंगा कि we can still call it instead of it being private just because it is protected otherwise in implementation. वो जो Python 2.9 थी, 2.9 तक it was private, and अब जब से protected variables की यूज थोड़ी बढ़ गई है inheritance की, तब से ये जो डबल अंडरस्कोर वाला है इसको प्राइवेट माना जाता है. माना क्या जाता है मतलब आप इम्प्लीमेंटेशन में खुद ही देख लोगे कि जो डबल अंडरस्कोर वाला that satisfies all the characteristics of private variable, whereas the single underscore satisfies the characteristics of all protected members. Should I proceed? Is that clear? Yes, sir. Perfect. So whenever we implement these things, so we need something to either indirectly access that private data member or private function. So in a typical programming essence, we call those functions as getter functions or setter functions. What getter functions do is they get us the content which is being stored in that particular instance attribute, which is private or protected. What setter function does is it simply sets the value which we input. Now, what is the use of these functions? Because the variables are now private or protected, so we cannot access them directly outside the class, from outside the class. I hope that's clear.
So to access those variables from outside the class, we do nothing but access these getter and setter functions, which indirectly access those private data members. And these getter and setter functions, because they are defined within the class, so they have full right to access those without any restriction, right? So this particular concept is also similar to the ones implemented in C and C++. Am I right? Or any problem if you have? No, sir. All right. So see, age, name and salary. So ideally what you all were asking, that salary, I have written it as a private instance variable, but I am merely calling it here outside the class, and it is getting printed as well. As the salary is being initialized to none, so when I am calling it here, it is getting printed. It is just because of the fact it is no more private in Python 3.1 and later. And I'm using the latest Python. So yeah, it is printing none, just because with double underscore, it is called private, and with single underscore, it is called protected, or more or less public, I would say. So this is just a convention which is being changed. So what you guys have to remember is just that single underscore works analogous to protected, and double underscore is strictly private. Is that clear? Yes, sir. Perfect. So I have mentioned it here as well. Please execute it side by side. So see now, I have not accessed the salary parameter directly, but I have called the setter function, and to print the same, I have used the getter function instead of directly calling the salary, as we were doing until section 5a. So now that we are talking about private variables, I cannot access them directly, and I am just calling the setter and getter functions, which are already a part of this class. And just because they are the part of this class, they can access those private data members which are being declared in the class. Is it clear now? Yes. Perfect. So these were the attributes, and as in every characteristic of OOPS, we have covered both attributes and functions. So now coming on to functions, it goes same with those. Starts with a single underscore, the name, rest everything is same. And again, to call these functions, we need getter and setter functions, which are defined here. All right. So se.age.name.salary. Again, none gets printed, just as I told you, single underscore salary is not a private data member. So can we use constructor instead of setter or getter function? Right. Yeah, definitely you can use a constructor. Constructor has the access to each and every variable, but how would you use the constructor? Could you please elaborate? How will you use? Like we used to use it in C++. Yeah, but you can't use constructor to print things now. The default constructor initializer function of Python. Yeah. If you want to perform any initialize, we can functionality, yeah. Just to initialize those, but to perform any functionality or any applications of the variable other than initializing, you need to call these functions. It is just a nomenclature. We call them getter or setter. It is like they are modifiable. You can always modify them according to your need. It's just a way of representing and calling the private data members, or like interacting with the private data members or the private functions. All right. So see, I have written set salary to I have defined set salary as to calculate the salary, and calculate salary. Why? Just because calculate salary has a underscore, which means that it is a private. I cannot call calculate salary directly from outside the class. So I have used the setter function to call this function. Now this getter and setter, again, I have repeated this, that they are the part of the class, and hence they have full right to access any data member of that particular class, be it private, be it
protected, be it public. Is that fine until here? I hope you all are executing it side by side. Yes, sir. Perfect. So execute 5.2.2, 5.2.3. So everybody at par till 5.2.3 as we are coming on to our final section. Is everybody at par? Please raise your hands who are at par with me and have executed 5.2.3 with me. Yes, sir. All right, all right. So should I start with the final one? Yes, sir. Okay. So now many of you were asking if we have other decorators or so. So here comes the section you all were talking about. So we have so first of all, this is the advanced concept of Python called decorator. So if you guys do not understand it, don't worry. So as I told you that you guys will be covering deep learning in your third week. So in your third week, you will come across a library which is called PyTorch. So PyTorch has the use of decorators, although it is a very advanced concept. If you like say go across 5 notebooks of PyTorch, you will find them in only 1 or 2. But yes, you will surely get it. But again, it is an advanced concept and there is a chance you might not get it in the first place, but don't worry, I will try my best. So starting off, now let me introduce you to the first inbuilt decorator, which is at property. So first of all, note the difference that the getter function we used to define looked like this, but now we are defining it like this. So it is serving the same purpose as the initial getter function, but now we are just using a decorator to just represent it in a more Pythonic way, like a more high level way, although it has more or less in low level programming, it has more or less no benefit, no extra benefit, but yes, it is a more better way in high level programming. So you must be seeing that now getter and setter function have their point of difference in just the name of the decorator they are represented with. They both are named salary. They both have the self keyword, but the decorator they are preceded with has a different name. Am I right? Yes, sir. Yes. Are you guys able to make the difference what I'm saying? Yes, sir. Perfect. So first of all, I'll show you all the decorators and then I'll tell you the use case. So this is one of the other decorators, which is called delete decorator, which is analogous to that destructor concept in C++ or C. So now we do not, first of all, we cannot directly call them now just because of the fact they all are named salary, right? So what we do is we declare an object of that particular class, se.salary. We set the salary, and when we print it without the calculation process, it prints as it is. And 6.3, what 6.3 does is, now this particular decorator function could not be called by the name salary, right? So what we are doing is we are executing this particular statement which basically deletes salary from the memory, and after that if you try to rerun this particular statement, print se.salary, it will throw an error just because it has no attribute named salary in their memory.
So any doubt in the overview of the decorator? First of all, decorator has no particular functionality as the static method initially I told you, but it is the more elegant and dynamic way of writing the same thing, but like in a more dynamic way. So rest, this is the theoretical part, you can always go through it. So this is the analogous getter function, and this is the setter function. So the syntax is, the getter function is written at property, and the setter function is written as the firstly it is preceded with a variable name with which we are going to make the application in the function, but and dot setter. Setter is the keyword. Setter will be coming with each and every implementation you do, but salary is your application dependent. Here I am modifying the particular variable which is called salary. So we write here salary, and if had it been another variable which is, let's say, name, so I would have written at name dot setter. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. So try executing once. After deleting this, add a print statement here which says sc dot salary. So this line would throw an error. I am not executing just because I have not executed all the cells. I have pre-executed it. So you guys try once and just let me know if you are getting the desired results. Yes, sir, it is giving the error. It's getting the attribute error. Attribute error, exactly. Attribute error says that the allocation has not been done, which means that this statement has successfully run, and what this statement has actually done is implemented these 3 lines and nothing else. So yeah, that was it from my side. Any doubts? No, sir. Perfect. सर इसमें रेफरेंस क्लास का भी कोई कॉन्सेप्ट है? Reference class as in? जैसे सर जावा में या सी प्लस प्लस में न्यू कीवर्ड के थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, वो डायनामिक एलोकेशन होती है। यस सर, डायनामिक एलोकेशन। वो डायनामिक एलोकेशन वाले एडवांस कंसेप्ट है, बट हाँ वो एटलीस्ट डीप लर्निंग अप्रोचेस में तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अभी, मतलब इनिशियली in your at least until your 3rd or 4th week in this summer school, you'll not require them. Baki, you can always check them, they're available readily, but these were just the basics to just give you an overview of each and every basic concept that you would require in the next 2 or 3 weeks. All right. Sir. Yes. सर हमने वहां पे sc डॉट सैलरी इज इक्वल टू 6000 की जगह ब्रैकेट में 6000 नहीं लिख सकते? क्या आर्गुमेंट डालता है? हमने सीधा वेरिएबल लिखा ना sc डॉट सैलरी, नहीं तो sc इज इक्वल टू ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, बट हमने लिखा sc डॉट सैलरी, विच मीन्स कि जो सिर्फ सैलरी है हम उसी की वैल्यू दे रहे हैं। हाँ, अगर आप यहाँ पे किसी और डेटा टाइप की वैल्यू दोगे देन इट वुड थ्रो एन एरर। अंडरस्टूड? सर अगर मल्टीपल डेटा मुझे पास करना हुआ 6000, 7000, 2 पैरामीटर, वो तो कर ही नहीं सकते आप, वेरिएबल ही है क्या, उसमें एक वैल्यू स्टोर होगी ना, वो लिस्ट थोड़ी है। अच्छा, तो उस डेकोरेटर से सिर्फ एक वेरिएबल का हम डेटा सेट कर सकते हैं? नहीं, अच्छा, हाँ 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 एग्जैक्टली, डेकोरेटर्स, बिल्कुल। तो आप उसके लिए अलग अलग डेकोरेटर्स बनाओगे, मतलब आप उसके लिए अगर आपको 4 वैल्यूज भेजनी है तो आप 4 अलग गेटर फंक्शंस बनाओगे। डेकोरेटर से तो कोडिंग करना और हार्ड हो गया। हाँ, तो वो यही है, वो थोड़ा बस जिसको बोलते हैं डायनामिक एंड एलिगेंट वे है, वैसे कोई इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, बहुत आगे जाके जरूरत पड़ती है, बट चलो मैंने तभी बेसिक्स ही बताया, अभी इसमें भी बहुत कुछ है। जैसे अभी तो हमने प्री डिफाइंड डेकोरेटर्स यूज किए हैं, बट यूजर डिफाइंड डेकोरेटर्स भी होते हैं जो हम अपने खुद डिजाइन करते हैं। दिस इज वन ऑफ द यूजर डिफाइंड ओनली। जैसे प्री डिफाइंड इतना ही या और भी है? प्री डिफाइंड बहुत सारे हैं, ये तो आप लिस्ट देखोगे दे आर ऑलमोस्ट 30 to 40 डेकोरेटर्स। तो डेकोरेटर्स बेसिकली एडवांस कॉन्सेप्ट है, हर जगह नहीं दिखेगा आपको, और अगर आप
100 जुपिटर नोटबुक्स देखते हो तो उसमें से आपको 90 में नहीं दिखेगा, बट वो जो 10 हैं कि हाँ वहां पे जाके आपको ऐसा ना लगे कि ये तो करा ही नहीं है, तो इसीलिए I have included the overview of the decorators which you would be requiring. So any other doubt? All right, seeing none, sir. Okay, Adil, thank you very much. So I think ये चीजें समझ में आई हैं आप सभी को. And the part is that कि जिनको oops वगैरह आता है, इन्होंने अपने सेमेस्टर में पढ़ा है, तो they can easily understand कि क्या चीजें हैं ये. Okay, and so let's take a 15-minute break. 5 o'clock हो गया है, and we will return back by 5:15. Okay. So I hope oops काफी लोगों को समझ में आया होगा, काफियों को नहीं आया है, but no worries. Basically the thing is that कि we want to just give you the glimpse कि oops Python में कैसे यूज होता है. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा सा अपने आप भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए. ये कराने का ऑब्जेक्टिव ये था कि whenever we are dealing with the libraries, जैसे अभी आदिल ने बोला कि PyTorch है अपने पास, ठीक है, तो वहां पे हम यूज करेंगे, तो ये चीजें वहां पे आपको कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ ठीक है ये हो रहा है. तो दैट्स व्हाई वी गिव यू द, अभी हमने स्टार्ट कर दिया है, सो दैट द कंफ्यूजन ना हो. चलिए, तो क्लास लेट्स स्टार्ट. So that this is the second part of this today's talk, working with pandas. So just click on the link. चलिए, just click on the link. To day 3, working with pandas. So it will redirect you to my GitHub. So now, yes, Panda is one of the wonderful library for data analytics, data visualization. Sorry, not visualization, data pre-processing. So it is an open source Python library that provide high performance data manipulation and analysis tool using its powerful data structures. So class, let's suppose there is a log file that consists of, let's say, 5 GB data in a single CSV file, and you want to process it. Process means, let's suppose we want to search, we want to extract some information. ठीक है, ये process करना हो गया. So 5 GB की file को process करना Pandas के through is very fast because it highly uses its powerful data structure and बहुत optimized library है. Even though you can also write the same code for that particular operation, but there might be a possibility कि वो उतना कम time में नहीं कर पाएंगे जितना Pandas का काम कर पाएगा. So that's why Panda is one of the very important library. अभी यहाँ पे हम इसको start करने वाले हैं. So just click on this notebook and start करिए. Okay class, so just click on the collab, and before moving for collab, so this is a self learning resources जो मैंने आपके लिए कुछ वीडियो, selected videos मैंने खुद select करके आपके लिए यहाँ पे डाले हैं. So before after the class I am requesting all of you इन वीडियो को भी थोड़ा सा explore करना, just give half an hour, so काफी चीजें यहाँ पे आपको और भी clear हो जाएंगे. And these are the some features of pandas. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे मैंने आपको बताया, फास्ट एंड एफिशिएंट है. There's are tools for loading the data into memory. Okay, data alignment करना है, integration करना है. We need to reshape, pivot the data sets, label slicing करनी है, indexing करनी है. Okay, different grouping करनी है, and time series functionality है. So these are the some key features of pandas. So as you come up with the data pre-processing part, डेटा साइंस पार्ट, उसके लिए जो pandas है वो काफी हेल्पफुल रहेगा. चलिए, तो जस्ट ओपन इन द कोलैब.
तो आई होप सभी ने इसको ओपन कर लिया है। तो वेरी Yes, फर्स्ट sir. है कॉपी टू ड्राइव। सबसे पहले कॉपी दिस notebook to your drive. You can also upload this notebook जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसको भी आप अपना बना के अपने उस पे डाल दीजिए GitHub पे। Just rename this file working with pandas. Let's suppose somebody asks in the interview or viva कुछ भी कि do you know how to work on pandas, तो you can easily show them, ठीक है। और यहाँ पे कोई copyright वगैरह नहीं है, ठीक है, कि आप इसको यूज नहीं कर सकते। यू आर कंप्लीटली अलाउड टू यूज दिस कोड इन योर गिटहब, और कहाँ भी यूज करना है, नो वरीज। चलिए, तो क्लास डन। चलिए नेक्स्ट। सो वेरी फर्स्ट वी नीड टू इंपोर्ट द लाइब्रेरी। So just press Control Enter. So again it is connecting, initializing and connected. So now you can realize the power of collab. तो पढ़ाना और पढ़ना कितना इजी हो गया यहाँ पे, ओके। अदरवाइज इफ वी स्टार्ट विद द एनी आईडी, मैं चाहे स्पाइडर लेता या फिर जुपिटर नोटबुक लोकल में करता, सो मल्टीपल एरर्स में भी देयर कि कोई लाइब्रेरी इंस्टॉलेशन नहीं आ रहा है, सिंटैक्स में चेंज आ रहा है, फिर एक सिंक में नहीं आ पाता है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको गिटहब पे डालो, सॉरी कोलैब पे काम करिए एंड गिटहब पे उसको एक्सपोर्ट कर दीजिए। तो आई होप सबने इंपोर्ट कर ली है लाइब्रेरी। सो पांडा है, ओपन सीवी है, सम अदर लाइब्रेरीज आर बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड इन दिस कोलैब, okay। So as we proceed, so we need to install some libraries, okay। वो हम कैसे करना है वो आपको हम बताया जाएगा। तो राइट नाउ लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई है। तो ना क्लास वेरी फर्स्ट स्टेप इज वर्किंग विद सीरीज। तो सीरीज इज नथिंग बट अ वन डायमेंशन लेबल्ड array, okay। So now just execute 1.1. Just execute 1.1. So here A1 is a list and we converted it to series by a function series, pd.series, उसमें हमने list को pass कर दिया है। So A2 is created, so A2 is now a list, sorry series। तो इसमें क्या है कि labeled है, यानी कि every column has a labeled and data set है, okay। Now label में क्या है, इसमें यहाँ पे जैसे 0 1 2 3 that is a label। आई होप ये सबको समझ में आया। यस सर, मतलब इंडेक्सिंग साथ साथ में हो गई ना? इंडेक्सिंग साथ साथ में हो गई, ठीक है। आगे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। जस्ट कम टू 1.2, फर्स्ट रन द कोड। सो इसमें डी टाइप क्यों आ रहा है? हाँ, अभी थोड़ी देर बताता हूँ। A series has been created with data along with its index. So let's suppose मैं खुद का कोई इंडेक्स बनाना चाहता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्सिंग होती है दैट इज 0 1 2 3 4, बट मैं चाहता हूँ मेरा खुद का इंडेक्स हो जाए, जैसे सिमिलर टू डिक्शनरी में हम करते हैं। खुद का हमारा रोल नंबर हो गया, देन CGPA, या फिर मैं नाम रख सकता हूँ, होम टाउन हो जाएगा। तो सिमिलरली आई एम क्रिएटिंग टू लिस्ट्स। A1 कुछ नंबर है, A2 हमारा अगेन कुछ नंबर्स, कुछ उसमें कैरेक्टर्स हैं। आफ्टर दैट आई एम क्रिएटिंग अ सीरीज A3 सीरीज मैंने क्रिएट की है। So I'm just passing A1 to A2, okay। So this time A, B, C, D, E, I, these all are the indexes and उसका ये data set है। Now last में ये जो आया है ये इसका data type बता रहा है, जैसे आपने int, char, float ये सारी चीजें पढ़ी हुई, तो इसका data structure है, ठीक है। Now अब ये जो A3 वाली लाइन है इसको uncomment करिए and rerun the code again। तो दिस टाइम मेरा जो इंडेक्स है वो चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सीरीज में A1, A2 पास किया था, देन कुछ और इंडेक्स था। नाउ दिस टाइम आई पास A2 एंड A1, so you will see the index become numeric values। सर डी टाइप फिर से बताना क्या था? अरे ऑब्जेक्ट मतलब वो इंट का है, जैसे ऊपर हमने देखा था इंट इंटीजर टाइप का, ये कुछ ऐसे ये अदर इंफॉर्मेशन है। जैसे आपने अभी
आदिल ने जो क्लास ली थी उसमें वी आर प्रिंटिंग द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या कर रहा था, प्रिंट के साथ उसका डेटा टाइप भी बता रहा था, ये कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है एंड उसका एड्रेस क्या है। तो दीज आर द एडिशनल इंफॉर्मेशन जो ये चीज प्रोवाइड कर रहा है। यस तो सर इसमें डी टाइप जो है वो पहले इनटू होता है, इस बार कैर नहीं होना चाहिए था ऑब्जेक्ट की वो जगह। नहीं यार, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि डेटा टाइप क्या है। ऑब्जेक्ट हो सकता है, कैर हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तो उसकी इंफॉर्मेशन बता रहा है। तो जैसे लेट सपोज इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो इसने भी ऑब्जेक्ट बताया है। ऑब्जेक्ट हमारा इस बार न्यूमेरिक हो गया, आउटपुट जो डेटा है हमारा वो कैरेक्टर हो गया। ओके चलिए। तो सर ये मैपिंग कर देता है ना, फर्स्ट आर्गुमेंट को दूसरे आर्गुमेंट के साथ मैपिंग कर देता है, मैप कर देता है, जैसे हैश में होता है ऑर्डर्ड वे में। ऑर्डर्ड, नॉट ऑर्डर्ड वे में, मतलब जैसे आपने कोई लिस्ट डिक्लेयर किया है, एरे को डिक्लेयर किया है, तो इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 होता है। बट दिस टाइम आई वांट कि मेरा खुद का कुछ लिस्ट बन जाए, खुद का कुछ रहे। नाउ अब एक काम करिए, A3 को कमेंट करो, अब इसको कमेंट करो, इसको दोबारा एग्जीक्यूट करो। सर अगर हम A1 या A2 में से कोई ऑर्डर चेंज कर दे, AZEF कर दे, तो वो ऑर्डर्ड होगा या क्या होगा? नहीं, ऑर्डर नहीं होता है। ऑर्डर मतलब देखो, ऑर्डर का मतलब क्या कहना चाह रहे हो तुम? मान के चलो मैंने इसको यहाँ से हटाया, GH को हटा दिया यहाँ से मैंने, एंड लास्ट में पेस्ट कर दिया। तो जिस ऑर्डर में, जिस सीक्वेंस में आपने इसका इंडेक्स दिया है, ये वही चीज आ गई है। Are you getting? Just execute again. Now, इसमें आपकी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। Just run this code, access the data in series. मुझे एक्सेस करना है। So this time just see, I am passing the B. B is the index. अब A B पे क्या स्टोर है मेरा? Just see here 3. तो A B पे 3 वैल्यू प्रिंट होगी। Similarly AI पे क्या स्टोर है? 4. तो 4 प्रिंट हो गया। ओके क्लास? Yes, sir. सर यस सर पहले हमने A3 is equal to pd.series A2, A1 जिसको हमने अभी कमेंट कर रखा है, अगर हम उसको अनकमेंट करके उसके बेसिस पे नीचे करते हैं तो हम A3 और ब्रैकेट्स में लिखेंगे, ब्रैकेट्स में कोई नंबर लिखेंगे, कोई इंटीजर लिखेंगे। सर तो वो सर तो वो इंटीजर को इंडेक्स मानेगा या फिर जो हम वैल्यू दे रहे, मतलब जो वैल्यू उसमें है हमारी लिस्ट में है उसके? जस्ट वेट, अभी कर लेते हैं। जैसे दिस टाइम माय इंडेक्स वैल्यूज आर 1 3 5 7, है ना? यस। अगर मैं इसको एक्सेस करूंगा तो इट विल गिव एरर कि भाई बी और आई नाम से कोई इंडेक्स नहीं है, ठीक है? एंड आई नीड टू पास 1, देन आई नीड टू पास 3। आर यू गेटिंग? सो 1 पे क्या स्टोर है? A है। 3 पे क्या स्टोर है? B है। बट इफ यू गिव 2, तो 2 एरर देगा। तो मतलब इसमें क्या दे दिया इसने? 2 प्रेजेंट है। 2 अच्छा, यस सर, F वैल्यू दे दिया। तो लेट्स सपोज आई गिव 20 इंडेक्सिंग पे नहीं है, तो वो एरर दे देगा। ओके सर, है ना? तो यहाँ पे हमने को यूज करना चाहिए एक्सेप्शन हैंडलिंग। एग्जैक्टली हमें पता लग जाना चाहिए यहाँ पे ऑलरेडी इसने इतनी बड़ी एरर दे दी है अपने को, ठीक है? बट सम टाइम हमें को खुद को भी इसको एक्सेप्शन देना चाहिए कि एरर है तो क्रैश ना करे प्रोग्राम। तो क्लास आई होप सभी को समझ में आया है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। यस सर। Next 1.3, we want to create a series using dictionary. थोड़ा सा एनालाइज करो, कोड को एग्जीक्यूट करो। So first I am declaring a dictionary and after that I am converting to series. तो ये चीजें आपको समझ में आ रही है कि डिक्शनरी से हम सीरीज कैसे बनानी है अपने। यस यस सर, Yes, sir. नेक्स्ट 1.4, creating a series using nested list. तो nested list आपको पता है, लिस्ट विद इन अ लिस्ट। कैसे अपने को सीरीज बनानी है,
तो देखिए, now one more important thing here. अब let's suppose इसमें indexing 0 1 है, अब मैं A2 में लिख रहा हूँ 1, so it will print the values at location at 1. So 1 में हमारी second list है, तो पूरी list print होगी हमारी. Yes. तो बेसिकली जो पांडा एक लाइब्रेरी है और वो दो लिस्ट को कंबाइन कर रही है. नहीं, लिस्ट को कंबाइन नहीं कर रही, बेसिकली हम अपनी इंडेक्सिंग अपने हिसाब से चाहते हैं. ठीक है, डेटा है हमारे पास एक लिस्ट में एंड हम चाहते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा इंडेक्सिंग हम अपने हिसाब से बने. ठीक है, और पांडा खाली यही नहीं है, पांडा अभी आगे और भी चीजें हैं. ओके क्लास. सर बेसिकली पांडा है क्या, मींस ये हम लोग का जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी. अभी आगे देखो, आगे सुनो वो क्या कर रहे हैं. Come to 2.1. So next is data frames. So data frames are two-dimensional data structures which has rows and column, यानी कि मैट्रिक्स. Okay. तो जो अपने को डेटा रहता है वो अपना सम उसमें रोज हैं, सम कॉलम्स हैं. So that is just a data frame. And class in 99% cases जो भी हम डेटा हैंडल करते हैं वो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में ही रहेगा. Means that consists of some rows, some columns. So as we started machine learning in the second week, तो वहाँ पे हमारा जितना भी डेटा अवेलेबल रहेगा वो मैट्रिक्स की फॉर्म में रहेगा. उसमें कुछ कॉलम्स रहेंगे, कुछ डेटा रो में रहेगा. Okay. So now come to execute and analyze 2.1. Creating a data frame using dictionary. तो यहाँ पे हमारे पास डिक्शनरी है that consists of only two key, age and name. अब यहाँ पे देखो हमने डेटा फ्रेम pd.data-frame को कन्वर्ट किया एंड D2 में हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया. तो जस्ट सी, यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गई है that consists of 2 columns only and there are 4 rows. Okay, so that is a very basic operation कि हम कोई डेटा फ्रेम बना रहे हैं. Okay, तो अच्छा एक चीज आपको मालूम है what is CSV, comma separated values? Yes, no? Yes sir. No, No sir. sir. Very good. अगर नहीं मालूम तो just let me show you a demo. देखो क्लास, जैसे ये CSV है, फाइल का जो एक्सटेंशन है CSV is comma separated value. Means if I open this file in any notepad, so you will find कि every value is separated by comma. ठीक है, it is nothing but a simple text file. Got it? Simple text file and every value is separated by comma. That's it. Now, if I open the same file, double click किया, so by default it will open in the Excel. Now you will see this value is just visualized in the column and row format. Are you getting? तो जो हमारा Excel होता है ये इसको अच्छी तरह इंटरप्रेट करता है and it will show us in the in column tabular form. Class agree? So most of the cases में जो डेटा हम प्रोसेस करेंगे that will be available in the form of this CSV file. यानी कि it has some rows and it has some columns. Yes, no? Yes sir. Yes, sir. चलिए, तो CSV समझ में आ गया. बेसिकली इट इज यूज फॉर डेटा शेयरिंग. लेट्स सपोज मुझे कोई डेटा आपके साथ शेयर करना है, तो मैंने CSV में एक्सपोर्ट किया, उसको जिप किया, आपको ईमेल कर दिया. ठीक है, सिंपलेस्ट वे. एंड 99% केसेस में हमारे पास जो डेटा सेव होता है हम CSV में ही करते हैं, फाइल्स में अगर सेव करना है तो. चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो क्लास 2.1 समझ में आया आपको कि वी हैव अ डेटा इन मैट्रिक्स सॉरी डिक्शनरी, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया डेटा फ्रेम में. कम टू 2.2. एनालाइज करो, एग्जीक्यूट करो. So we are creating a data frame using nested list. So list within a list, multiple lists are there, 4 lists are there. तो हमने D1 create किया. After that we are converting D1 to data frame and we want to give the name column names.
So we assign the column name as beds and area. Let's suppose अगर मुझे कॉलम का नेम रीनेम करना है तो बेड 10 कर दिया, एरिया कर दिया तो 20 कर दिया. You rerun again, so you will find कि कॉलम नेम भी हमारे चेंज हो गए. Okay, and by default the indexing is always start with 0 1 2 3. So I hope ये सबको समझ में आया. Yes, sir. Yes, sir. Next, assigning indexes within a frame. Let's suppose we want to index our own indexing. तो जैसे हमने अभी ऊपर सीरीज में देखा था कि we are giving indexing. तो क्या किया मैंने सबसे पहले, there is a dictionary that consists of name, marks and some properties. In name में there are four students and marks में भी उनके four corresponding marks है. After that, what I did here, so pd.dataframe d1. So d1 is the same object जो अपना dictionary है यहाँ पे, and comma index. अब just see यहाँ पे index 2 3 1 4 आ गया है, यहाँ पे index 2 3 4 1 आ गया है. Class, are you getting? Yes, These are the very basic steps कि हमें कैसे process करना है. इसको हम आगे आने वाली क्लास में अभी इसको हम और भी उसमें करेंगे कि लेट्स सपोज हमें कोई डेटा रीड करना है, कोई राइट करना है, प्रोसेस करना है, सेलेक्ट करना है, मर्ज करना है. तो दीज आर द ऑपरेशन जो पांडास के थ्रू बहुत सिंपल एंड इजी वे में हो जाता है. ठीक है, अभी थोड़ा सा हम और आगे देखने वाले हैं. चलिए कम टू 2.4, थोड़ा सा एनालाइज करो, एग्जीक्यूट करो. So we are creating a data frame using list of dictionaries. सबसे पहले list है, उसके अंदर multiple dictionaries है, मतलब एक dictionary है, तो एक नहीं दो dictionary है. So one dictionary is there. This is one dictionary and this is another dictionary. So you will see it is creating a data frame, creating a that consists of 2 rows and 3 columns are there. Next, plus this is wonderful and this is very important. इसको ध्यान से करिए. So let's suppose we want to create a random data set. It is very important. Many times we require to create our own columns, own data sets. First of all, इसको execute करो एक बार. You will find कि हमने अपना खुद का एक random data set generate किया है. Okay. Now that consists of 6 columns from A to E. एंड जनरेट कैसे किया देखिए. अब तो सबसे पहले कॉलम एक हमने डिक्शनरी बनाई है. आफ्टर दैट वी वांट टू जनरेट रैंडम नंबर्स बिटवीन 1 and 9. तो क्लास दिस इज द ब्यूटी जो हमने कल लास्ट क्लास में किया था कि फॉर लूप विद इन द लिस्ट. So it will run for 5 times and every time it will give random number between 1 and 9. So just see here कि जो हमारा A column है that consists of only numbers between 1 and 9 only. If you rerun again, you will get different numbers. Okay. Now, next column B, तो हमने क्या काम किया, उसको 10 नंबर से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया. जो भी रैंडम नंबर आएगा वो मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा. So similarly, you will see in column B, so it is a multiple of 10. Similarly, in column C, I multiply it with 100. You can give any numbers. Let's suppose we want to give minus 9 to 9. Okay. Minus 10 to minus 10. So it is up to you. ठीक है कि क्या रेंज में आप देना चाहते हैं. Next, this is important one. Column D. So that consists of random strings, length of 5. Okay. So now just see here. First, I am running a loop for 5 times. And every time, first I am generating a string. तो हमने जो कल पढ़ा था strings में samples s sky underscore letters. So it will select 5 random letters. After that, we are joining it. Class, I hope ये सबको समझ में आ रहा है. ये हमने कल अच्छी तरह किया था. So you will see in the column D, we are able to find multiple strings
of length 5 or different random strings of length 5. Okay, class? Yes, no? And Yes, sir. in column E, you will find कि हमने एक static value दे दी, E and F. So you just see कि हमारा E में hello hello आया है and F में भी single value आई है. Okay, class? So this is the way we can create a data set of different series. हमने कैसे कैसे columns को value देनी है. You can easily create in Excel also, but when we are talking about creating some automation, the Excel will not work. Let's suppose मैंने अभी आपको बोला यहाँ पे कि random size जो फाइल का साइज है, जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसमें लेंथ 5 है, ठीक है भाई, डन, आपने एक्सेल में कर लिया है. But suddenly after some time I'm saying यार 5 नहीं 6 करो, तो वही चीज एक्सेल में मैन्युअली आपको करना पड़ेगा. बट इन प्रोग्रामिंग आपको सिर्फ 5 का 6 करना है, वो अपने आप स्ट्रिंग लेंथ 6 आ जाएगी. So that's why I try to automate through programming only, because वहां पे अगर कुछ भी हमें पैरामीटर चेंज करना है तो that can easily change. एक्सेल में मैनुअल में बहुत टाइम लग जाएगा. Class, are you getting? So what's numpy? क्या चीज? Numpy. numpy, हाँ, numpy is one of the library. इसको हम कवर करेंगे कल, ठीक है. numpy is a library, so that is just a numerical Python. So let's suppose there is a matrix. Class, ध्यान से सुनना. There is a matrix of 10,000 by 10,000. Everybody, you know, matrix multiplication का program आप सभी को आता है. But let's suppose I want to make 10,000 by 10,000 की matrix का multiplication का program मुझे लिखना है. तो एक खुद का प्रोग्राम बनाओ और एक numpy के थ्रू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो. सो डेफिनेटली जो numpy के थ्रू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा वो फास्ट रहेगा आपके प्रोग्राम से. उसको जस्ट ट्राई करिए. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द क्लास, जस्ट ट्राई टू मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस यूजिंग numpy एंड योर प्रोग्राम. फिर देखो टाइम किसमें ज्यादा है कम आ रहा है. ठीक है, ये छोटा सा एक असाइनमेंट आपको करना है, नोट डाउन कर लीजिए इसको. चलिए नेक्स्ट क्लास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब जो हम डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा एनालिटिक्स. डेटा होता क्या है? सो जस्ट सी हियर, जस्ट रन 2.6. so there is a function with the name describe. Execute करो उसको. So describe means it will give me the some statics values for my columns. ठीक है. Now, but see here, it gives only for 4 columns. यहाँ पे मेरे पास कितने थे? 6 columns थे. और यहाँ पे कितने? 4 columns. Why? कोई बताएगा मुझे? वही कॉलम सेलेक्ट किए जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज है. सर इंटीजर की वैल्यू के लिए शो कर रहा है वो सिर्फ. वेरी गुड, वेरी गुड. यानी कि बाय डिफॉल्ट जिस भी कॉलम में कोई भी नॉन न्यूमेरिक वैल्यू हुई उसको ड्रॉप कर देगा. ओके, सो नाउ जस्ट सी हियर, वेरी फर्स्ट एनालिटिक्स इज काउंट, कितने नंबर ऑफ रोज हैं. मीन, उस पूरे कॉलम का मीन क्या है, उस पूरे कॉलम का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है. एंड नाउ दीज आर द क्वांटाइन वैल्यूज. 25% पे क्या है, 50% पे क्या है, 75% पे क्या है. ओके, so this is the very basics analytics जो हमने डेटा सेट अभी randomly जनरेट किया, उसका ये हमने स्टैटिक्स जनरेट किया है. and just see it is very simple, df.describe. ये समझ में आया आप सभी को? yes. चलिए 2.7. so date as index. so let's suppose I want कि date index में आ जाए हमारी. so just see here, there is a function with the name date range and I want period 6. ठीक है, and just see here, so I created 6 dates and उसमें 6 days का आ जाए, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो तो नेक्स्ट 6 तक आ जाए. तो जस्ट सी हियर, 1 से स्टार्ट हुआ, 2 3 4 5 6. so you can generate the dates. similarly in the next step, data frame np.random randin, so it will generate a random number between 6 and 4. okay,
एंड इंडेक्स में डेट्स कर दिया। नाउ जस्ट सी हियर क्लास, जो हम डेट्स हमने जो ऊपर डेट जनरेट की है, ये डेट जनरेट किए हैं, इसका हमने इंडेक्सिंग कर दिया है, ये डेट्स यहाँ पे हमने उसको कर दिया है, यहाँ पे असाइन कर दिया ग्रेड डेट्स। नेक्स्ट कॉलम लिस्ट, एंड आई वांट द कॉलम शुड बी A B C D। क्लास एग्री? आई होप ये सबको समझ में आया, थोड़ा सा इजी है। फर्स्ट वी क्रिएटेड some dates and after that we assign it as an index। चलिए, सही नेगेटिव वैल्यू क्यों लिया? ये जो नेगेटिव वैल्यूज क्यों ली है, फिर जो रैंड एन है ना, ये रैंडम नंबर जनरेट करता है बिटवीन माइनस, मतलब नेगेटिव भी नंबर आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट, if you want to know the column names, so there is a variable with the name columns। so df is data frame, data frame जो मैंने अभी बनाया है यहाँ पे, that is known as data frame, and just columns, so it will return the column names। so just see, it is just showing the columns in the list। अच्छा class, just see here, I am just printing df.columns। if I am going to print this value, okay, so it will give me the same result। okay, and then one more thing is there, cat होता है क्या? नहीं, cat R में होता है, ठीक है। okay class, so by doing this way we are getting the column name। class, this is one of the important property। let's suppose we want to know column name क्या है, 5th number का। let's suppose data आपके पास that consists of 20 columns, 20 columns are there, and you want to know कि column के name क्या है, and वो column select करो जिनका name A से start होता हो। Are you getting? A column से ना, अभी ऐसी कोई situation नहीं है, but let's suppose you have multiple columns of 20 columns and you want कि वो column select हो जाए जिनका नाम A से शुरू होता है। So in that case this will help you कि मैंने I am just getting the list that consists of all the columns। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा प्री प्रोसेसिंग और करूंगा कि इसमें से जो भी लिस्ट A से स्टार्ट हो रही है वो मेरे पास सेलेक्ट हो जाए। चलिए नेक्स्ट, I want list of names। जस्ट क्या है यहाँ पे, just see here, start 0 to start 5 and कितने स्टेप कर रहा है 1। now ये क्यों हुआ है, बिकॉज जो डेट्स मैंने स्टार्ट की हुई हैं, तो डेट में 1 से स्टार्ट हुआ 5 तक गया हुआ है, और 0 से स्टार्ट हुआ है, जो हमने यहाँ पे ये जनरेट किया था इंडेक्स स्टेप नंबर 2.7 में, एंड उसको हम इंडेक्स देखना चाहते हैं, तो ये इंडेक्स में का इसने यहाँ से एक रेंज जनरेट कर दी है। क्लास यस? Yes sir। Yes sir। Come to step number 2.10, just execute। so sorting by an index। Class, there are two indexes, sorry, axis 1 and axis 0। now एक काम करिए, just bring your mouse to this yellow line, yellow जो ये आपको दिख रहा है, ये ब्रैकेट है आपकी, so you can able to see some help of that particular function। if you scroll down, तो just see कि अगर मैंने 0 पास किया है, then it will sort index wise, यानी कि row wise, and अगर मैंने इसको 0 दिया है, इसको मैंने 1 दिया है, then it will sort column wise। क्लास ये समझ में आया? and I passing a variable ascending equal to false, यानी कि वो डिसेंडिंग में करेगा, तो दैट्स व्हाई f की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो f पहले आ गया। now make it true, so वही वैल्यू है जो मेरे ओरिजिनल में था, अदरवाइज सॉर्टिंग भी इसने कर दी है। तो क्लास ये समझ में आया सभी को? नेक्स्ट, इंडेक्सिंग जो एक्सेस है इसको 0 करो। अब एक्सेस 0 इंडेक्स के हिसाब से सॉर्ट हो गया, तो 0 1 2 3 4 5। नाउ इसको फॉल्स कर दो, एग्जीक्यूट करिए, then you will find it is starting from 0 to 4 to 0। so class, now let's suppose you have a file that consists of 10,000 rows and उसको रिवर्स ऑर्डर में करना है, तो just see here
कि बाय डूइंग जस्ट सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन हमारा कोड में उसने पूरी फाइल को रिवर्स कर दिया है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप उसको खुद को कोड करते या फिर एक्सेल में सॉर्ट करते या कुछ और करते तो इस टाइप से आपको कितना टाइम लग जाता? Sir, यस sir, in my Google Colab, it's giving a different output for this code. Yes, sir. Same. डिफरेंट आउटपुट मतलब सर उसमें आप में जैसे 0 1 2 3 4 आ रहा है, तो लेकिन मेरे में अभी सिर्फ डेट्स ही आ रही हैं, और फिर डेटा भी जो है A B C and D वो भी डिफरेंट फॉर्मेट में आ रहे हैं, मतलब सारे डेसिमल्स आ रहे हैं। अरे सुनो सही, मैंने हो सकता है मैंने इस लाइन को देखो एग्जीक्यूट नहीं किया, 2.7 को मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ है। अच्छा, ओके सर। जो डेटा फ्रेम मेरा यही वाला है ना, मैं इसी को उठा रहा हूँ। ओके सर। आर यू गेटिंग? यस सर। Yes, yes. चलिए, तो सॉर्टिंग बाय एक्सेस हो गया कि मुझे कॉलम वाइज सॉर्ट कर रही है या रो वाइज सॉर्ट कर रही है। ओके, नाउ class, this is very important, most important part of this pandas. I want to sort a column with respect to column values. Okay, so just see here, df sort by values and by b column. ये b column है, and just see ascending equal to true. तो देखिए यहाँ पे सबसे लीस्ट वैल्यू टॉप पे आ गई है एंड सबसे सिर्फ बी के कॉलम के हिसाब से सॉर्ट हुआ है। लेट्स सपोज इफ आई वांट टू गिव एज डी कॉलम, तो डी के हिसाब से कॉलम सॉर्ट हो गया है। ये कई बार हमारे पास यूज होता है। लेट्स सपोज आई हैव अ डेटा सेट ऑफ स्टूडेंट्स एंड आई वांट टू सॉर्ट ऑल according to the CGPA values. Okay, but a student have roll number, name, email ID, phone number. मैं CGPA के हिसाब से सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो by doing only in single line I can sort it. Otherwise Excel में खोलेंगे, इसे सॉर्ट करेंगे, फिर सेव करेंगे, नहीं। तो हमें इस तरह से कर सकते हैं। क्लास यस? चलिए नेक्स्ट, selecting a data. Class, this is also one of the important. अब यहाँ पे हमने क्या काम किया, df फिर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स के अंदर df को हमने लिखा है is greater than 0. तो क्लास put na and where condition is false. If you give at -1, so -1 हमारे यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं है। नहीं क्या किया इसने, सॉरी 1 दिया हमने। क्या था दिस, आई थिंक क्या है, नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्रिंग। ओके जस्ट एक मिनट, तो जो मेरा 2.7 था उसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ एक बार। यस क्लास 2.7 को जो वैल्यू मेरा एग्जीक्यूट नहीं किया था उसको। नाउ जस्ट सी हियर, तो यू विल फाइंड कि जहां पे 0 से वैल्यू मेरी छोटी है, नेगेटिव नंबर्स है, तो वहां पे उसने नैन को प्रिंट कर दिया है। अच्छा, टेल मी वन थिंग, इफ आई चेंज 0 to 1 क्या होगा? नंबर ऑफ नैन्स बढ़ेंगे कम होंगे? क्लास बढ़ेंगे। बढ़ जाएंगे। परफेक्ट, वेरी गुड। देखो नैन्स बढ़ गए हैं। सिमिलरली आई एम गिविंग -1, तो नैन्स कम हो गए। ओके, तो दिस इज द वे वी कैन सॉर्ट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ आप में से जिन्होंने DBMS सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, so they can easily correlate. Let's suppose there is a database and we want to select some particular results. If CGPA is less than greater than 8 or age is less than 90, तो वो हमने जो SQL query लिखते थे, this is the same thing. Now just see here, I want a selection in the column name
कि ए कॉलम की वैल्यू अगर जिसकी 0 से ग्रेटर है, तो ओनली सेलेक्ट दोज कॉलम वैल्यूज। यू सी, जिसकी नेगेटिव नहीं है वो नहीं आया है, 0 से लेस देन है वो नहीं आया, जो ओनली पॉजिटिव वैल्यू आते हैं। So let's suppose I want to run it for B column, तो चेंज करो A को B, तो B में सिर्फ 2 वैल्यूज आई हैं। Class done? Yes, no? Yes, sir. Perfect, good. So class, it is also one of the data structures, जो data frame है, ये भी एक data structure ही है. And yesterday we covered 4 data structures, okay, in Python. And the thing is that there are multiple operations like select करना है, delete करना है, sort करना है, merge करना है, ठीक है, join करना है, append करना है, concatenate करना है. So these are the some operations जो हम data frame पे कर सकते हैं. Okay, so class, these are the things. तो आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा इसको फास्ट हम करेंगे. तो सबसे पहले come to 3.1, uncomment every line and run. So क्या हुआ, df अगर हम वेरिएबल को लिख रहे हैं तो वो सारी वैल्यू शो कर देगा. अगेन df कोलन, यहाँ पे मैंने कमेंट्स में भी कुछ लिखा हुआ है, df 1:4, तो shows 1 2 3 columns and shows all columns. क्लास देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, it shows only 3 columns, sorry 3 rows and 4 columns. तो columns all हैं हमारे, it shows all columns, but rows ने शो किए 1 2 and 3. कोई बताएगा फोर्थ कॉलम, फोर्थ रो क्यों नहीं सिलेक्ट की है? सर वो अपर लिमिट हमेशा वो हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, लास्ट वाला अपर लिमिट हमारा एक्सक्लूड रहता है, ठीक है, तो इट्स शोइंग रो नंबर 1 2 and 3 ओनली. चलिए नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, इट शोज ऑल रोज ऑफ कॉलम ए. अगर कोई मुझे पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करना है, किसी पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करना है एंड आई वांट ऑल द रोज, तो कैसे लिखना है? इस तरीके से लिखना है. ओके, करिए नेक्स्ट. इट इज गिविंग एरर. नेक्स्ट टाइम यू वांट कि 2 कॉलम सेलेक्ट हो जाए, उनके सारे कॉलम, तो उसको इस तरीके से नहीं देंगे, इट विल गिव एरर. अगेन इसको अनकमेंट करिए और नेक्स्ट लाइन को सॉरी इसको कमेंट करिए, नेक्स्ट लाइन को अनकमेंट करो. So let's suppose you want more than 1 column, then you need to give list within a list. Okay, single column है तो चल जा रहा है, but if you want multiple columns, then you need to give list. उसकी list देना पड़ेगा आपको. So just see, I am getting column number A and B. So class, these are the important parts of pandas. If we can make the manipulation, these are the some manipulation only, selection कर रहे हैं हम, ठीक है, तो ये manipulation के बाद भी हम कर पाएंगे. आगे जाके we will update some values कि मुझे सिर्फ इस particular value को update value करनी, तो हम देखने वाले हैं. तो I think यहाँ पे सबको clear हो गया. If we want some selected columns and all the rows, so let's suppose I am giving 6, C दिया, so just I am getting A and C. But if you want selected rows, कि I need from 1 row to 3rd row only, तो पर्टिकुलर रो में भी सिलेक्शन हो जाएगा. तो इट इज जस्ट शोइंग मी 1 and second row of A and C column. Class, are you getting? Yes, yes sir. Last line को uncomment करिए. So it clearly explains, it shows only 1 and 2 row of column A, B and C. Yes, चलिए 3.2. So if we want to access the data from data frame using column names, so LOC is there. Okay, चलिए uncomment करिए, execute, and यहाँ पे इसने कुछ और शो कर दिया है. ओके क्लास, ये मॉर्निंग में भी हमने जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ली थी वहां पे शो कर रहा है, एरर शो कर रहा है. द थिंग इज दैट
कि ये आई थिंक एलओसी वाला जो चीजें हैं इसने यहाँ पे नए वर्जन ऑफ पांडास में इसको ड्रॉप कर दिया है। तो प्लीज इसको मुझे फिक्स करने का थोड़ा टाइम दो, इसको मैं फिक्स करूंगा, कल आपको मैं दोबारा बताऊंगा ये, ठीक है, कि एलओसी क्या है। अदरवाइज इसमें क्या रहता है, जस्ट गिव द रेंज ऑफ रोज एंड कॉलम नेम इन द लिस्ट, यानी कि हमें अलग अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो डेफ डॉट एलओसी ये चल जाता है, बट राइट नाउ ये चल नहीं रहा है, तो मुझे आई थिंक उन्होंने कुछ अपडेट किया है, उसको मैं फिक्स करके आपको कल बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट कम टू 3.3। अगेन देयर इज अनदर फंक्शन विद ILOC, ठीक है, तो इसके थ्रू भी हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए जस्ट अनकमेंट फर्स्ट लाइन, okay, it is also showing error. ओके, तो क्लास जस्ट सी देखिए, वो तो पहला जो हमने अनकमेंट किया था उसमें एरर ही है। इफ यू डोंट गिव एनी पैरामीटर इन कॉमा इट इज एरर, तो एरर ही मैंने लिखा हुआ है। ओके, तो ना इसको अनकमेंट करो, फर्स्ट वाले को, सेकंड को, सॉरी फर्स्ट वाले को कमेंट करो, सेकंड वाले को अनकमेंट करो। तो शो ऑल रोज ऑफ ऑल कॉलम्स। देखिए क्लास, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल रोज ऑल कॉलम्स, अगर हमने कुछ नहीं दिया है तो। सिमिलरली नेक्स्ट कोलन कॉमा 1 2 3, ये भी एरर है। वी कैन नॉट एक्सेस कॉलम नेम्स विद 1 2 3, हमको लिस्ट बनानी पड़ेगी। एग्जीक्यूट करिए, तो क्लास दिस विल शो ऑल कॉलम्स, सॉरी ऑल रोज ऑफ कॉलम 1 2 3। अब यहाँ पे हम कॉलम की इंडेक्सिंग कर दी है हमने। अब कॉलम की इंडेक्सिंग देखिए, कॉलम ए से स्टार्ट था, लेकिन यहाँ पे बी सी डी आ गया। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ ILOC, कि हमें कॉलम को इंडेक्स, कॉलम को यूज कर रहे हैं बट इंडेक्स के नाम से, हमें नाम से मतलब नहीं है, हमें कॉलम नंबर 10, कॉलम नंबर 11, कॉलम नंबर 12 चाहिए, इस टाइप से। तो कीप इन माइंड कि हमें वहां पे ILOC चाहिए। ओके क्लास, तो इस तरह से फटाफट इसको एग्जीक्यूट करिए, कमेंट एंड अनकमेंट करते रहिए, मेक इट फास्ट। और जो कमेंट में लिखा है इसको भी देखते रहिए। Now just see the second last and last part, negative indexing. I already told you negative indexing होती क्या है। तो जैसे नेगेटिव इंडेक्सिंग में दिया है :-2, तो लास्ट 2 कॉलम को छोड़ दो, तो यहाँ पे D and D था उसको छोड़ दिया उसने, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3, तो 1 and 3 हमारे रोज हैं, एंड :-2, तो लास्ट 2 से इसने उसको हटा दिया है। क्लास दोबारा देखिए, so it's just showing row number 1 and 2 only. After that last 2, तो लास्ट 2 से इसने 2 कॉलम्स को हटा दिया है, तो 1 से स्टार्ट होके एंड ये हमारा C तक गया है, सॉरी B तक। एग्री? सिमिलरली इफ आई गिव -2 इन द रोज, तो लास्ट की 2 रोज को छोड़ देगा वो, एंड आई नीड ओनली 1 and 3 कोलन। सो फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट में मेरा B था और सेकंड पे C है, थर्ड को उसने ड्रॉप कर दिया है, तो ओनली 2 कॉलम्स आर सिलेक्टेड। तो क्लास ये ILOC क्या है कि हमारे पास जो डेटा फॉर्मेट है इन मैट्रिक्स की फॉर्मेट में, डेटा फ्रेम, उसमें से हम रो वाइज, कॉलम वाइज, पर्टिकुलर कॉलम, पर्टिकुलर रोज कैसे सिलेक्ट करना है, तो दीज आर द थिंग्स। चलिए 3.4 कॉन्केटिनेट करना है अपने को। तो क्लास देयर आर 2 ways to concatenate. So in the 3.4 I am just declaring two data frames, D1 and D2 को मैंने फ्रेम बनाया है। So let's suppose I am printing D1, data frame 1 and data frame 2, ये 2 डेटा फ्रेम है मेरे, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए यहाँ पे,
इफ यू आर प्रिंटिंग df1 df2, तो यहाँ पे दोनों का में जो लास्ट वेरिएबल होगा वही प्रिंट होगा. इफ यू वांट टू प्रिंट both the values, then you need to specify print. So this time it will print df1 also and df2 also. So df1 में मेरे पास I have 4 columns and df2 में मेरे पास I have 3 columns. Now अब इन दो डेटा फ्रेम्स को मुझे मर्ज करना है. रो वाइज मीन्स एक के नीचे एक, कॉलम वाइज मतलब कॉलम वाइज. ओके, अब देखिए कैसे करेंगे क्लास. दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए. सो देयर इज अ फंक्शन विद द नेम कॉन्कैटिनेट. ये कई बार होता है हमारे रियल लाइफ में भी. लेट्स सपोज वी आर गेटिंग द डेटा सोर्स फ्रॉम डिफरेंट फाइल्स. ठीक है, हमारे पास 10 फाइल्स हैं एंड वी वांट टू मर्ज ऑल द डेटा इनटू अ सिंगल फाइल. तो मैन्युअली नहीं करने का अपने को. ठीक है, फाइल को उठाओ, डेटा को पांडास के थ्रू उसको कन्वर्ट करो, देन हर एक वेरिएबल में से जो डेटा आया है उसको मर्ज कर दो. So this is the way we can concatenate. So just see here, so there is a function concatenate. It requires 2 parameters. किन डेटा फ्रेम्स को हमें मर्ज करना है एंड एक्सेस. अब एक्सेस क्या है वो हमको यहाँ पे पैरामीटर बता देगा. ओके, तो यहाँ पे जो ये ब्रैकेट है इसमें जस्ट ब्रिंग यू अ मैसेज, सॉरी माउस, और यहाँ पे हमको ये बता देगा कि उस पैरामीटर में हमारा उसकी वैल्यू क्या है, एक्सेस का मतलब. So axis, if I am providing 0, then index wise 1, column wise. तो यहाँ पे हमने 1 दिया है, तो column wise एक कॉलम के बाद दूसरे कॉलम को लगा दिया है. तो just see here class, these are the first 3 values, first 3 columns of first data frame, and 0, 1, 2, 3 वो हमारे उसके next data frame के थे. Now one interesting, see here, just see here, because number of rows are less in second data frame. तो वहां पे कुछ नहीं मिला उसने इसको NAND डाल दिया. तो क्लास आई थिंक ये आपको समझ में आया. यस नो? Yes sir. परफेक्ट. नेक्स्ट, इफ आई एम गिविंग एक्सेस 0, तो एक डेटा फ्रेम के नीचे दूसरे डेटा फ्रेम को लगा देगा. और जस्ट सी हियर, एक सेकंड डेटा फ्रेम था उसमें एक कॉलम मिसिंग था, तो उस सारे कॉलम की वैल्यू उसने 0 कर दी है. ओके क्लास? यस सर. नेक्स्ट, एंड जस्ट सी हियर कि हमारे यहाँ पे जो इंडेक्सिंग है 0, 1, 2, 3, 4, अगेन 0, 1, 2, 3 आ गया है. तो दिस इज द इंपॉर्टेंट टर्म्स. वी वांट टू रीसेट आवर इंडेक्सिंग. इसको रीरन करिए एक बार. This function reset index will completely reset all the indexes. अब देखिए यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू सारी हमारी चेंज हो गई है. Now can you tell me कि why indexing resetting is important? If you see in the above example, let's suppose I want the value of 0 index पे, but there are 2 indexes of 0. Similarly 1 पे 2 indexing, 2 values है, तो किसको देखेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा. Got it? तो इसलिए दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि अपने को यहाँ पे इंडेक्सिंग की वैल्यू को रीसेट करना है. तो दीज आर सम पैरामीटर्स. ड्रॉप इक्वल टू ट्रू किया है, इनप्लेस इक्वल टू ट्रू किया है. क्या मतलब है? इफ यू एक्सप्लोर द मैनुअल तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. चलिए नेक्स्ट, सिमिलरली इंडेक्स इक्वल टू ट्रू, उसको एग्जीक्यूट करिए. तो यहाँ पे उसने इंडेक्स को इग्नोर कर दिया है. एंड द थिंग इज दैट डेटा फ्रेम को मर्ज किया है, कॉन्कैटिनेट कर दिया है. तो यहाँ पे उसने इंडेक्सिंग को इग्नोर कर दिया. मान के चलो लेट्स सपोज देयर आर मल्टीपल वैल्यूज एट द सेम इंडेक्सेस, तो उसने उसको मर्ज नहीं करेगा, दोनों में से एक ही को रखेगा. एंड जस्ट मेक इट फॉल्स एंड चेक करो कि क्या हुआ है. ओके क्लास? देखो इसका यहाँ पे एडवांटेज क्या मिला. देयर इज नो नीड टू रीसेटिंग द इंडेक्स वैल्यू. इग्नोर इंडेक्स फॉल्स कर दिया है, तो वो ओरिजिनल इंडेक्स की वैल्यू रिटेन रही है.
बट मैंने इसको अगर ट्रू कर दिया है तो जो मेरे को एडिशनल रीसेटिंग ऑफ इंडेक्स करना पड़ रहा था वो नहीं करना पड़ेगा। क्लास आर यू गेटिंग? यस नो? Yes. Next 3.5 class, this is one of the important shuffling of the data. ये बहुत important एक function है because many times when we are working with the machine learning, तो many times हमको data को shuffle करना पड़ता है। Row wise mostly करना पड़ता है 99 times, 99% में row wise ही करना पड़ता है ये shuffling of the data. Okay, so this is the important thing. तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, rerun the code. Just see index की वैल्यू चेंज हो रही है। Rerun again, तो वो रो वाइज शफल कर रहा है। ठीक है। Now second thing, यहाँ पे frac है and just give the value of frac as none. तो frac क्या करेगा, वो कॉलम वाइज कर देगा। आई थिंक ये फ्रैग क्या होता है? क्या चीज? फ्रैक Frag क्या पैरामीटर है होता ना। फ्रैक इस पे माउस पे लाओ और माउस पे यहाँ पे आपको बता रहा है कि फ्रैक क्या है। ये फ्रैक एक फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस है। आइटम टू रिटर्न कैन नॉट बी यूज विद एन। ये पैरामीटर है एक जिसकी वैल्यू हम फ्लोट या ऑप्शंस को रख सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट फ्रैक नन है, डिफॉल्ट 1 वैल्यू रहती है। ठीक है। अब फ्रैक को एक बार हम 0 करें, 0 में काम करेगा, कुछ नहीं किया इसने। अगर फ्रैक ना दे हम तब क्या करेगा, तब एक ही को शफल किया हुआ। क्लास आर यू गेटिंग? Yes, sir. यस चलिए, तो शफलिंग हो गया अपना रो वाइज। नेक्स्ट, अब क्लास ना आपसे रिक्वेस्ट है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने एडवांस चीजें यूज की हुई हैं, जैसे जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे अपने डीबीएम से पढ़े हैं, इनर जॉइंट, आउटर जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट। ठीक है। तो हमें पर्टिकुलर मल्टीपल कॉलम्स में से सिर्फ वही कॉलम उठाने जो सेम वैल्यू के हैं, सेम कॉलम नेम है, सेम रेंज में बिलोंग करते हैं। तो इसके लिए कुछ हमने इंसर्शन और ये कुछ जॉइंट्स को यूज किया हुआ है ना। जॉइंट का मैं थोड़ा सा नीचे आएंगे आप। सो नाउ दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ जॉइंट्स। जैसे इनर जॉइंट मींस वो डेटा सेलेक्ट करना है जो दोनों फाइलों में कॉमन है। लेफ्ट जॉइंट क्या कर रहा है, वो डेटा सेलेक्ट करना है मुझे, जैसे आपने ये इट इज नथिंग बट, अगर मैं आपसे बोलूं तो जैसे हमने वो किया था, क्या होते हैं हमारे, कौन से ग्राफ होते हैं वो, वेन डायग्राम। ठीक है। तो दीज आर द जॉइंट्स, लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट, फुल आउटर जॉइंट। तो ये हमें करने होते हैं जब लेट सपोज हमारे पास 2 डेटा फाइल्स हैं, 2 अलग अलग डेटा फाइल है या 3 फाइल है, 4 फाइल है, एंड वी वांट सम कॉमन डेटा सेट्स जिसका रोल नंबर एंड जिसके मार्क्स 10 और 15 के बीच में है, वो फर्स्ट में से और फर्स्ट 2 में से उठ जाए। तो क्लास ये चीजें आपने डीबीएम में एसक्यूएल क्यूरी में लिखी हुई हैं। तो आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, इनको थोड़ा सा अगर आप खुद एक्सप्लोर करें तो ये आपको सही, आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। फिर ये पढ़े नहीं है पहले, क्या चीज? ये जॉइंस वगैरह पहले पढ़े नहीं है डीबीएमएस में, था नहीं, नहीं। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। डीबीएमएस में अगर नहीं पढ़े, डीबीएमएस सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ा तो नो वरीज। ये थोड़ा सा एडवांस टाइप का हो गया है। अभी तक जितना पांडास में हम मोस्टली यूज करते थे वो 70-80% हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सिलेक्शन करना, मर्ज करना, ठीक है, हमको कोई फिल्टर लगाना है कि एज की वाइज। पांडास, वाई पांडास इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसका जो फंक्शनैलिटी है वो बहुत फास्ट है। अभी तो हमारे पास बहुत छोटा डेटा है, बट लेट सपोज वी हैव अ 10 GB डेटा सेट। अगर ये डेटा 10 GB में होता एंड मुझे कोई पर्टिकुलर वैल्यू को सिलेक्ट करना, तो देन इट विल एग्जीक्यूट इन जस्ट वेरी वेरी फास्ट। हमें सेलेक्ट करके डेटा सेट दे देता है। मतलब एक्सेल के ऊपर अपर हैंड है। अब एक्सेल तो बहुत नीचे है यार। एक्सेल तो मैनुअली करना पड़ता है, या तो प्रोग्रामिंग के थ्रू करता पूरा है। तो दैट्स व्हाई दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पांडास। बेसिकली जो पीएल, एसक्यूएल या एसक्यूएल वगैरह उनसे बहुत ऊपर है।
यस यस, देखो क्या होता है, PL SQL जो भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं उसे डेटाबेस से फेच करना पड़ता है, ठीक है। नाउ अब ये क्या है, पांडास आपके पास एक लोकल फाइल है, ठीक है। तो लोकल फाइल में प्रोसेस करना, उसको अपने हिसाब से इसको स्टोर करना, वो रीड जब डेटा को कर लेता है उसके बाद उसको क्यूरीज हम शूट कर सकते हैं। राइट सर। ओके, तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ पांडा। अभी आपको नई चीजें समझ में आई हैं, बट व्हेन वी आर वर्किंग विद अ ह्यूज डेटा सेट, 10 GB का डेटा है, 1 GB का डेटा है, 20 GB का डेटा है, देन इसकी हेल्पफुलनेस पता लगती है कि अरे यार बहुत फास्ट कर रहा है। बिकॉज एक्सेल में 10 GB की फाइल, 1 GB की फाइल खुलेगी नहीं आपसे, एंड हाउ यू कैन प्रोसेस दैट। तो इन दैट केस हमको पांडास पे ही आना पड़ेगा। ओके, तो क्लास आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, इसको थोड़ा सा अपने आप एक्सप्लोर करें, ये इजी काम है, ठीक है। एंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो आपको मैंने वीडियो दी है लास्ट में टॉप में, इन वीडियोस को एक बार जरूर एक्सप्लोर करो यार। तो एक थोड़ा सा आपको एडिशनल मैंने होमवर्क दिया है, तो लास्ट में हमने कुछ डेट्स को चेंज करना, डेट्स के हिसाब से वही ऑपरेशन परफॉर्म किए। तो क्लास एटलीस्ट 70-80% हम पांडास को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये पांडास की 10-20 मिनट्स की जो 3-4 वीडियोस हैं, इनको जरूर एक्सप्लोर करो। एंड कोई इशू होता है तो प्लीज ड्रॉप मी ईमेल, आपको रिप्लाई करूंगा।